Good evening, everyone. Good evening, everyone. Let's start in 1 minute so that others can join. Just 1 minute. So, good evening, everyone. I welcome you all in this session for 1 day session for how to read show cause notice and how to handle or basically work on drafting this notice, reply to notices. I hope the PPT is visible to you, and I hope you must have received link for downloading the files and you would have downloaded the files. During this session, I would request you to use chat messengers, even for raising queries. So as soon as I read them or find it linked, I will reply to all your queries. Second thing, why answering or mentioning this in uh, chat messenger rather than Q&A, that whatever you write here, it is recorded. So post session, these queries are saved. So if I miss any query, answering any query, then I can answer it later on. Okay. So let us understand. See, leave this part. Uh, you have this PPT. You can read it later. You have other things to do. Basically, most of the litigation are with government. PSU and government are having 46%. But let's understand what the national litigation policy means. And I hope my voice is clear. You can give a thumbs up or you can reply in chat messenger if my voice is clear. If there is any disturbance, do tell me. Okay. So national litigation policy bifurcates litigation into two parts. Sir, I will not allow anyone to talk. Why you are raising hands? I don't understand. Pre-litigation, litigation, and post-litigation. So once a show cause notice is issued, it is considered to be start of the litigation. Then we come for post-litigation. See, a notice has been issued, order has been passed against you, and you disagree with the order. Once you disagree with the order, then it becomes post-litigation. See, the session which we have discussed this today is mix of English and Hindi. So it will be mix of Hindi and English. Predominantly, it would be in Hindi. If someone has any issues, uh, then they can take a leave here itself. इंग्लिश और हिंदी मिक्स में चलेगी इस सेशन में. सो लिटिगेशन शुरू हो रही है. इट स्टार्ट्स विद शो कॉज नोटिस. देन व्हाट इज प्री लिटिगेशन? सो प्री लिटिगेशन मीन्स कि नोटिस इशू ही ना हो. सो देर आर सर्कमस्टेंसेस वेयर law says that we should come with such kind of regime कि भैया नोटिस ही ना दिया जाए. एंड हाउ कैन दिस हैपन कि भाई नोटिस ही ना देना पड़े? नोटिस तो जाएगा. So they come with pre-litigation concept, and they says that we will create a situation, we will create a mechanism कि उसमें नोटिस ही ना देना पड़े. And double AR is one of those things. कि भाई नोटिस ना देना पड़े जब एसएससी को लगता है कि जी कुछ गड़बड़ है, और whether he doesn't understand something or he has any confusion, so then they can approach double AR and they can get a sort of relief or order in their favor, or the ambiguity or clarification is provided. It's theoretical. Practically, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं that double ARs have created more confusion than any other entity. Also, there is
Rule 142, 1 capital A. This speaks about pre-litigation, pre-show cause consultation. This means कि एक ऐसा काम कर दे कि भाई आपको नोटिस ही ना देना पड़े. Without giving notice to you, you get solution. What is the solution? Why notice is issued? Kiss department has some information. Department has some information, and there is a confusion between what is their view, what is your view. तो डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है. नाउ डिपार्टमेंट वांट्स अ क्लैरिफिकेशन. इन द नोटिस दे टॉक्स अबाउट एलिगेशंस अगेंस्ट यू. इट इज अबाउट एलिगेशंस. जरूरी नहीं कि जो शो कॉज नोटिस या नोटिस में दिया गया वी हैव टू एक्सेप्ट. वी कैन चैलेंज देम एज वेल. द पॉइंट which I want to convey here, that pre-litigation, pre-show cause notice is mandatory. पहले वर्ड shall था, shall को डिलीट कर दिया, shall की जगह may लिख दिया. So when the word used is shall, it means mandatory. When the word used is shall has been converted to may. Now, when it is word may, then whether it is mandatory और रिकमेंडेटरी, आप बताइए. शेल को डिलीट करके मे कर दिया. अब प्री लिटिगेशन या प्री शो कॉज नोटिस मैंडेटरी हुआ मे हो जाने के बाद या रिकमेंडेटरी हुआ? यस ऑन ओ सॉरी, कैन यू रिप्लाई इन चैट मैसेंजर? नाउ इट इज मैंडेटरी और रिकमेंडेटरी. सर इंटरेक्टिव रखते हैं. वी हैव 2.5 आवर्स. मैं आपका समय 2.5 घंटे मांगा है. अब 2.5 घंटे हम बात करेंगे विच इज वर्चुअल वन. सर, even after using the word may, it is mandatory. Even when the law is redefined, they have used the word recommend may. We will read may as shall. आप प्लीज इसको समझकर चलना. लिटिगेशन हम इसी तरह समझकर चलेंगे. डिपार्टमेंट ने अपनी सहूलियत के लिए क्या करा? शेल को मे में वो शेल को मे में कन्वर्ट कर दिया. Just because they have deleted the word shall and replaced it with the word may, it does not make it recommendatory. It is still mandatory. आप इस लॉ को इसी तरह समझकर चलिए. And I will substantiate what I have said with few case laws. कि may लिख देने से recommendatory नहीं बन जाता. Okay? So first point to note here. अगर आप चाहें नोट पैड या पेपर बुक कहीं पर भी है तो इसको नोट करके चलिए. दैट प्री शो कॉस्ट कंसल्टेशन इज मैंडेटरी इवन आफ्टर द वर्ड यूजेस मे. ओके. सो शो कॉस्ट नोटिस वी अंडरस्टैंड हाउ इट स्टार्ट्स. DRC 01 इज द नोटिस. डिटेल्स आर इन DRC 03. यहां से आपको नोटिस स्टार्ट होगा. पर प्री शो कॉस्ट कंसल्टेशन DRC 01A. So issuing DRC 01A is mandatory. It is not recommended. पार्ट ए में आपको नोटिस आएगा. पार्ट ए में आपको नोटिस आएगा and you will reply in part B. Once they receive this pre-show cost reply for pre-show cost consultation, then they have the right to drop their proceedings or they have the right to continue with the proceedings and they have to come to demand under section 73, 74 or maybe 75 also. And it becomes
show cause notice. You reply to show cause notice, they accept your reply, you have a justifiable reasons, they drop the proceedings. Baat khatam. They don't agree with your reply or they disagree, then they will go for TRC 07 order. And then against this order, you can file an appeal. First appeal is with appellate authority. First appellate authority would be joint commissioner or additional commissioner or the commissioner, smaller states. It would be 107 जब आप 3+1 month के डिले में अपील फाइल कर सकते with the payment of 10% of the disputed tax. Interest and penalty के अगेंस्ट में आपको कुछ पे नहीं करना. Let's move ahead. एंड नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी ने जो बेस्ट लिटिगेशन पॉलिसी है उसका अवार्ड सीबीआईसी को दे रखा है. They have said that this is the best litigation policy of India. एक तो थ्रेशोल्ड डिफाइंड है जीएसटी लॉज में कि इतने रुपए से कम की अपील के अगेंस्ट डिपार्टमेंट नहीं जाएगा अगर इतने रुपए एक्स अमाउंट से ज्यादा डिफरेंस नहीं है. Second thing, unless it's a constitutional validity of challenging anything. Second thing, CBIC has concept of pre-show cause notice, pre-show cause notice consultation. झगड़ा ही ना हो इसके लिए AAR है. AARs are to reduce litigation, and then every commissioner appeal has a threshold limit कि आपको minimum 70 केस तो हर महीने पास करनी है. You have to generate out. यानी कि एक क्वांटिटी भी डिफाइन कर रखी है कि हर कमिश्नर को मिनिमम इतना काम तो करना ही है. प्लस वी हैव टाइमलाइंस फॉर शो कॉज नोटिस एंड सर्विंग ऑफ शो कॉज नोटिस, सर्विसिंग ऑफ ऑर्डर. This is a circular, very important circular. And before this 2021 circular, we have one more circular for March by excise, where it defines the structure of show cause notice. वो भी बहुत important circular है. We call it March circular. So in this circular, they try to undermine the things, and they have said that pre-show cause notice is not mandatory when demand is because of fraud, collusion, willful misstatement. Basically, GST, it's about section 74. So यहाँ पर उन्होंने अंडरप्ले करने की कोशिश करी है कि साहब आपको प्री शो कॉज नोटिस नहीं जरूरी, पर हम इस बात को नहीं मानते. Even for 74, they should come with pre-SCN. DRC 01A आना ही चाहिए. And one more thing, when we talk about DRC 01A, so do we have other forms with these alphabets? आपने सुना DRC 01B, 01C, 01D, ये भी आए हैं. Have you heard about these forms? DRC 01B, C, and D. Yes, we do have forms PRC 01B, PRC 01C, PRC 01D. See, there are yes, no, not only for differences. Sometimes it is for recovering money also, or reversals also. So yes, we have DRC 01B, DRC 01C, DRC 01D. आज का ये डिस्कशन का टॉपिक नहीं है. ये छोटे छोटे फॉर्म्स में अलग से कवर करता रहता हूँ. आप अगर सोशल मीडिया पर मेरे साथ हैं तो आपको
पता हो कौन डूइंग। सो लेट्स कम। तो व्हाट आर द डिफरेंसेस फॉर या वैलिडिटी फॉर शो कॉज नोटिस? पहले ये बेसिक कर लेते हैं शो कॉज नोटिस की। प्री शो कॉज नोटिस की हम बात कर रहे हैं। सो द पर्पज ऑफ प्री कंसल्टेशन और प्री शो कॉज नोटिस इज टू रिड्यूस unnecessary action, unnecessary litigation. Because see, everyone is overburdened today. Assessing officer भी खाली नहीं बैठे, whatever the proper officer, the technical word is proper officer. See, हमारे जो assessing officer है उनके पास भी बहुत काम है, टैक्सपेयर को भी बहुत काम है और प्रोफेशनल को भी बहुत काम है. So pre-show cause notice consultation is mandatory. And see, रूल 142(1)(a) लाने का पर्पस ही ये था कि ये जो एज लॉन्ग विजडम है वो डालना भूल गए, वो डालना भूल गए. पुराने लॉ में भी, इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम में भी प्री शो का नोटिस कंसल्टेशन था, पर जीएसटी बनाते हुए हटा दिया. तो क्या सिर्फ इसी वजह से, बिकॉज उन्होंने नहीं लिखा या मे वर्ड यूज कर दिया, क्या इसका मतलब ये मान ले कि फिर प्री शो कॉज नोटिस कंसल्टेशन देना ही नहीं है? ऐसा नहीं है. बिकॉज व्हेन यू गो टू द स्कीम ऑफ डिमांड्स एंड रिकवरी, वहां पर आप देखेंगे दैट देयर इज रिलेवेंट डिटेल्स कि आप प्री शो कॉज नोटिस पर अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको एक्स परसेंटेज की पेनल्टी पड़ेगी या पेनल्टी नहीं पड़ेगी. इन 74 इट इज 15% पेनल्टी अगर आप प्री शो कॉज नोटिस कंसल्टेशन का रिप्लाई कर देते हैं. और अगर आपको शो कॉज नोटिस आता है तो 25% की पेनल्टी मिनिमम पड़ेगी. यू अंडरस्टैंड दिस? बात समझ में आ रही है? प्री शो कॉज कंसल्टेशन में, यानी DRC 01(a) अगर सेक्शन 74 में इशू हुआ, 73 74 का फर्क सबको पता है. आई होप यू ऑल नो द डिफरेंस बिटवीन 73 74 नॉर्मल केसेस और फ्रॉड केसेस. यस और नो? एन स्कीम ऑफ, yes, everyone knows. Except two answers, everyone knows this. Okay. See, so 74 की डिमांड जेन्युइन केसेस में, 74 is when it is because of fraud, uh, collusion, willful misstatement. I agree. Most of the officers keep on issuing notices in 74 in the genuine cases also. But then you can contest with them. So 74 में अगर नोटिस, अब अगर ये स्थिति मान लेते हैं, एक मिनट पीपीटी को देखता हूँ, एक सेकंड. एक सेकंड में. मैं आपसे एक और चीज डिस्कस करता हूँ. यहाँ पर जरा डिमांड्स की बात करते हैं. फिर देखिए, अगर हम ये पोजीशन मान लें कि प्री शो कॉस्ट नोटिस मैंडेटरी नहीं है बिकॉज ऑफ द वर्ड यूज्ड में, तो इसका मतलब प्री शो कॉस्ट नोटिस आएगा ही नहीं. इन्होंने कह भी दिया कि 74 में तो प्री शो कॉस्ट कंसल्टेशन देना ही नहीं है. सो व्हाट डज इट मीन कि सारे केसेस ऑफ 74 विल स्टार्ट विथ शो कॉस्ट नोटिस. अब अगर वो सारे के सारे शो कॉस्ट नोटिस से स्टार्ट होंगे तो फिर सारी डिमांड 74 में आएगी. कोई दिक्कत तो शेयर करता हूँ, एक सेकंड. कैन यू सी द कैन यू सी द पीपीटी? द पीपीटी चेंज की थी नेहल. एक्चुअली आई एम यूजिंग डिफरेंट पीपीटी फॉर दिस थिंग. सी 73 में पेनल्टी अमाउंट क्या है?
tax and interest before issuance of show cause notice. No penalty, no SCN. कि भैया, if you accept or if they drop the proceeding, then there is no penalty, no show cause notice. If a show cause notice is issued and you accept your mistake and pays it within 30 days, no penalty, no show cause notice. Okay. Interest will, however, change. Interest will continue. But let's come to 74. So if there is no notice, but it is pre-show cause consultation. So what is written? Tax and interest paid before issuance of show cause notice. Then penalty is 15% of tax. Penalty is 15% of tax. Show cause notice nahi aayega. If show cause notice is issued and if you accept your payment, you pay the payment of tax plus interest, then penalty will be 25%. बात समझ में आ गई? So this is difference of 10% penalty if you pay at pre-show cause consultation and you pay at show cause notice. तो pre-show cause notice में पे करने में आपको 15% पेनल्टी देनी है, शो कॉज नोटिस आने के बाद ये पेनल्टी हो जाएगी 25%. Now let's come back to our original PPT. What does it say? Let's understand this. So what does this say? When the case is of 74, when the case is of 74, you might not issue pre-show cause notice. अब बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? लॉ इस तरह लिख दिया, ये बोला कि प्री शो कॉस्ट नोटिस पर अगर आप पे कर देते तो 15% पेनल्टी लगेगी, और बाद में इसको इस तरह घुमा दिया कि जहां भी रिकवरी है 74 में तो वहां प्री शो कॉस्ट नोटिस कंसल्टेशन मत दो. तो अगर प्री शो, नाउ यू टेल मी कि अगर इस पोजीशन को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं एट दिस मोमेंट, will there be any case where you would be allowed to pay 15% penalty? आप रिप्लाई कीजिए. Now, in my humble opinion, अगर इस पोजीशन को हम एक्सेप्ट कर लें, then in each and every person, in each and every case, minimum penalty would be 25%. Yes or no? You getting my point? बात क्लियर है यहां पर? तो इसका मतलब तो लॉ को, जो लॉ में लिखा हुआ था उसको आपने बातचीत में घुमा दिया और ऐसी पोजीशन क्रिएट कर दी कि 15% पेनल्टी की तो बात ही नहीं आएगी. हमेशा आपकी पेनल्टी मीटर विल स्टार्ट विद 25%. And this is exactly the problem. I hope the PPT is clear. Now, this is exactly the problem which was addressed by Calcutta High Court, Jagdish versus Union of India. Now, Calcutta High Court in this case said that if you keep on doing like this, now if you keep on starting the meter with show cause notice, then where comes the role of pre-show cause consultation? This is a typing error. This is Allahabad High Court. I will get it corrected. I'm extremely sorry. Copy paste में गड़बड़ हो गई. Prima facie. Now in this, Allahabad High Court have said in this that DRC 01A under 142(1)A. LA लिख दिया, ये भी typing error है. Now in this,
If you do not issue pre-show cause consultation, then there is no opportunity of him to accept or deny the charges in pre-show cause consultation. Then you have reduced the opportunity of being heard. Now, the pre-litigation, the scheme of national litigation policy that we should have a pre-litigation regime. भाई लिटिगेशन तो आपके शो का नोटिस से इशूड हो रहा है, तो यहाँ पर DRC 01A ना आना आपकी राइट को खत्म कर रहा है कि लिटिगेशन में हम नहीं जाना चाहते. दैट इज वाई देर इज प्री शो कॉज नोटिस कंसल्टेशन. सो नाउ इन दिस केस, अगेन द टाइपिंग एरर इज देयर. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. 4-5 स्लाइड्स में हो सकता है, which I asked my team to develop. In this case, they have said that if you do not issue this 1A, then there is no case for issuing DRC 01. Without doing a pre-show cause notice consultation, अगर आप सीधा litigation start कर रहे हैं बिना pre-show cause consultation के, तो पूरी की पूरी proceeding void have been issued. And this is thing which has been discussed and accepted by High Court. So you have to understand कि जब भी आपके पास शो कॉज नोटिस आए, तो आपको सबसे पहली चीज ये चेक करनी है कि भैया प्री शो कॉज हुआ है या नहीं हुआ. अगर प्री शो कॉज नहीं हुआ, देन यू हैव टू कंटेस्ट एंड डिमांड अ प्री शो कॉज कंसल्टेशन. आप सीधा नोटिस पर नहीं जाइए, आप उससे कहिए कि भैया मेरे को pre-show cause consultation. So I've got a question. See, आप जो भी कुछ बोलना है, आप क्वेश्चन आंसर में मत लिखिए. You write in chat messenger, but I am answering this. See, there is 2 sections for demand and recovery. जहां पर हमें notices आते हैं. One is section 73 and the other one is section 74. Section 73 says 74 में issue. Section 74 says that if a pre-show cause consultation is issued, and if you accept the demand, so the penalty will be 15% of the tax demanded. Penalty will be 15%. But if a show cause notice is issued, means if you accept your liability at DRC 01A, then you have to pay 15% penalty. But if you accept this liability after issuance of DRC 01, then you have to pay minimum penalty of 25%. So the point of discussion here is that if you remove the process of issuing DRC 01A, then you have removed the opportunity for paying 15% penalty. Now I would be subjected to minimum 25% penalty. And that is why this regime or this method of issuing DRC 01, straight away DRC 01, instead of coming to pre-show cause consultation, DRC 01A is not acceptable, even after writing the word or replacing the word shall from may. So even if they have used the word may, I am saying that it is subject to mandatory. It is not recommendatory. Just because you have used the word may, that doesn't remove the liability of the officer to issue DRC 01A. Sir, I would humble request, sir, my humble request, please do not post anything in Q&A. Please post your questions or anything in chat messenger so that it can be recorded, it can be saved. It could be possible that there is some question which I am not able to answer right away. I would like to defer it and I will answer it. ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जिसका आंसर मुझे रेडीमेड ना आता. मैं मानता हूँ GST is a vast subject.
DRC 01A be dropped by the offer passing an order after our reply? Practically, yes. We have got many dropped, but वो order pass नहीं करते, वो सिर्फ note sheet पर entry करके दिखा देते हैं that we have accepted their reply. One question: one of my client received notice regarding reversal of ITC, which I replied deliberately after 30 but was calling for personal hearing within their power of. Sir, in fact, we will cover this point personal hearing, but as you have asked, yes, they have the power to call you personally. You should be happy that they are calling you for personal hearing. Incidentally, they don't provide you personal hearing even after you request. You should be happy that they are calling. Okay. We will come to this. I will come to this, Balaji, that we are going to have this time limit. September is the time limit, which we will cover it. And trust me, they will issue. We will discuss your point, Sandesh ji, when we will discuss service of notice. Okay. So the question comes कि भैया इतने notice आते क्यों हैं? Why there is so many notices? इतने notice कभी income tax में तो नहीं आए, फिर इतने notice GST में क्यों? ऐसा शायद ही कोई client हो in last 6 years which have not received any notice. Really. And those rare are those people who are paying 90 to 95% tax in cash. अगर आप 90 to 95% लाइबिलिटी अपनी कैश से डिस्चार्ज कर रहे हो तो फिर आपको नोटिस नहीं आएगा. एंड दोज आर लाइक प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल्स. इन फ्यू केसेस प्रोफेशनल्स तो 98% तक अपनी लाइबिलिटी कैश से दे रहे होते. वी डोंट गेट क्रेडिट. आपको क्रेडिट किसका मिलता है? ऑल टैक्स प्रोफेशनल्स माइट हैव जॉइंड हियर. बी योर टेलीफोन, इंटरनेट लीज लाइन, पेपर्स, और कैसा क्या खर्चा कर रहे हो जिसका क्रेडिट मिलेगा. So you pay by laptop, desktops, you buy once in a year or twice in a year. So that's not a natural feature. So, and see, GST law has been not drafted beautifully. And one of the biggest problem of GST is what they have initially drafted. They presented us before 1st July, and the law which was implemented on 1st July, that has saw sea changes. What is available in today in 2023. 6 साल में 1000 से ज्यादा बार ये लॉ अमेंड हो चुका है, with different notification, with different circulars, and today we have rules also. Many rules are there. और rules में भी number A, B, C, D आने लगे. Somebody few minutes before somebody said me कि sir ये जो notice है 88C में आ गया. And in fact last week only I did a Twitter space explaining this this notice of with 88D. So yes. और जिस तरह ये नोटिसेस आ रहे हैं या नंबर्स इनके बढ़ रहे हैं, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, 2 साल में ये Z तक ABCD खत्म हो जाएगी. You will see pre-show cost notice consultation DRC01A, B, C, D, E, F. See, I have devoted half an hour for pre-show cost consultation. Why? Because in coming times, this is gonna be big area of consultation or practice. Litigation DRC01 कम आएंगे, आपको ज्यादा झगड़ा DRC01A, 1B, 1C, 1D पर करना पड़ेगा. Reason the law they are planning to change, or which change I anticipate कि वो नोटिस के बात ही नहीं करेंगे.
अगर आप DRC 01B 1C का रिप्लाई करते हैं और वो एक्सेप्ट नहीं करते, देन दे गो फॉर डायरेक्ट रिकवरी। दे गो फॉर डायरेक्ट रिकवरी। आपने DRC 01B समझा? हाउ मेनी इफ यू रिकॉल DRC 01B किस में चीज में जाता? DRC 01B किस किस लिए इशू होता है? कैन एनीवन रिप्लाई चैट मैसेंजर? एनीवन? DRC 01B किस लिए? करेक्ट मनमोहन जी। एनीवन एल्स? से ट्राई तो करो। और आपका नाम किसी को पता भी नहीं चल रहा सर, आप क्या रिप्लाई कर? किसी को नहीं पता चल रहा। वो हमें सीख कर जाना है। आज हम 2 घंटे और बैठे हैं साथ में, हमें सीख कर जाना है। प्रैक्टिस भी तो बढ़ानी है ना। प्रैक्टिस यहीं से बढ़ेगी। सर आई हम्बल रिक्वेस्ट सर, मैं किसी को बोलने का चांस नहीं दूंगा आज। बड़ी मुश्किल में बोलने को मुझे सुन रहे हो आप मुझे। करेक्ट करेक्ट, एवरीवन इज राइट। DRC 01B, तो लेट मी एक्सप्लेन DRC 01B फॉर अदर। सी 2021 फाइनेंस एक्ट में वो चेंज लेकर आए। चेंज ये लेकर आए, उन्होंने कहा कि if there is a difference in liability in GSTR1 and 3B. For example, in GSTR1, you have shown your tax liability as 10 lakhs by mistake. And GSTR 3B liability is shown as, say, 1 lakh. So the gap of rupees 9 lakh is your assessed liability because you have shown this in GSTR 3B, GSTR1, and this assessed liability is undisputed one. Undisputed because this is your liability which you have shown in GSTR1. भाई 1 में आपने कहा मुझे 10 लाख देने हैं, 3B में आप कहते हो जी मैं 1 लाख रुपीज मेरी लाइबिलिटी है, एंड यू हैव डिस्चार्ज 1 लाख रुपीज लाइबिलिटी थ्रू ITC और कैश लिमिट। तो जो 9 लाख की लाइबिलिटी आपने GSTR1 में एक्स्ट्रा एक्सेप्ट करी, एंड यू हैव द प्रिजम्पशन इज दैट यू हैव पास ऑन दिस 10 लाख रुपीज टू सम अदर पर्सन, मतलब 9 लाख रुपीज एक्स्ट्रा पास ऑन कर दिया क्रेडिट किसी दूसरे आदमी को, एंड फॉर दिस यू हैव नॉट पेड टैक्सेस। तो ये 9 लाख की हम लाइबिलिटी अनडिस्प्यूटेड मानेंगे, एंड वी विल रिकवर दिस मनी फ्रॉम योर, वी विल रिकवर दिस मनी। अब ये जब 1 जनवरी 2022 से ये सेक्शन एप्लीकेबल होना था, तो दिस इज अ स्टोरी व्हिच आई एम टेलिंग यू इन द बैकग्राउंड। सो इकोनॉमिक टाइम्स ने एक न्यूज लिखी दिसंबर 2021 में, दैट टैक्समैन विल नॉक एट योर डोर टू रिकवर मनी। नो, when they said taxman will knock at your door, so many people thought this, that they are type of recovery agents that will come and recover your money. So when they, when Z News or other newspaper and other business channels also covered this point, तो डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके लिखा है दैट नहीं ऐसा नहीं होगा, वी विल नॉट कम टू रिकवर यू फ्रॉम योर ऑफिसेस फॉर द मनी, वी विल फॉलो द लॉ, वी विल फॉलो द प्रोसीजर, ये लिख दिया। We were the few ones who were speaking against this section from the day this was set to be implemented. And even after this tweet, we said that, okay, the law should be interpreted like this, that they will give a show cause notice and 3 months would be the given. After 3 months, they should give a show cause notice. But what happened practically? Because of the difference, they started recovering money from your bank accounts. GSTR1 में 10 लाख दिखा दिया, GSTR 3B में 1 लाख दिखाया, तो 9 लाख रुपीस उन्होंने आपके बैंक से डेबिट करने शुरू कर दिए। अब
अब इसमें प्रॉब्लम आई, people have started challenging this in high courts, various high courts. High courts have said, yes, this is wrong. You cannot recover money without issuing a show cause notice. इन्होंने फिर लॉ में दिखाया है कि सर शो कॉज नोटिस का तो प्रोविजन ही नहीं है. We have written the law in this way that there is no need for pre-show cause notice. Oh, sorry, show cause notice. Then courts have rejected their argument, and in all of the cases where the SSC has went to high courts for these kind of recoveries, all of their money was refunded by the order of the high court with interest. In fact, महालक्ष्मी इंफ्रा झारखंड हाई कोर्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन. उन्होंने कहा साहब आप लॉ में कुछ भी लिख दें, यू कैन नॉट चेंज एज लॉन्ग विजडम. देन because they cannot accept their mistake, they said that we will not issue show cause notice. That is why they came with a new form, DRC01B. That notice will be issued in Part A. You will reply in Part B of DRC01B. And if that is not acceptable, तो फिर आपको नोटिस नहीं आएगा DRC01 में, सीधा बैंक रिकवरी. This is the law has become this way. This is the correct. This is the interpretation by which the department is going on, and I think fair enough. हमने कहा था प्री शो को, हमने कहा था भैया नोटिस दे दो, तो नोटिस के बजाय उन्होंने प्री शो कॉस्ट कंसल्टेशन का फॉर्म डाल दिया. फेयर इनफ एट दिस पॉइंट. नाउ द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो शो, आज से अगर आप मुझसे 6 मंथ्स पहले ये डिस्कशन करते, ये डिस्कशन अगर 6 मंथ्स पहले हो रहा होता, तो मैं शायद कभी भी आपसे ये डिस्कस इतनी लेंथ पर प्री शो कॉस्ट कंसल्टेशन का डिस्कशन नहीं करता. आई वुड हैव नेवर डिस्कस दिस. बट व्हाट आई एंटिसिपेट that now it is DRC01A, 1B, 1C, 1D. In next 2 years, we will touch Z. There are more and more pre-show cost notice consultation coming in future. और एक एक साथ दो दो तीन तीन फॉर्म ये हर जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बढ़ाते चले जाएंगे. With every GST council meeting, but I anticipate कि 2 से 3 फॉर्मेट उठते चले जाएंगे. Now pre-show cost consultation is will become more interesting than the show cost notice. क्योंकि उसमें इतनी तरह के फॉर्म्स होंगे और किस लिए कौन सा फॉर्म इशू होना है और किसमें कैसे सर्विस लिखी है, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. किसी ने मुझसे अभी सर्विस ऑफ नोटिस के बारे में बात करी. आई हैव डेफर्ड हिज क्वेश्चन कि सर ये सर्विस ऑफ नोटिस हुआ नहीं हुआ कि मेरे को बाई हैंड फॉर्म आ गया. अभी के भोरा जी हंस रहे हैं. सर गलत बात बोली हो तो प्लीज बता दीजिए. anyway, सर आपकी हंसी देखकर ना, आपकी मुझे देखकर मुझे भी हंसी आ गई. तो हो क्या रहा है, जैसे फॉर्म्स हैं DRC01B, 1C, 1D, इसमें क्लियर कट लिखा है सर्विस ऑफ नोटिस. सर्विस ऑफ नोटिस इसमें यह है दैट इट विल बी सर्व टू यू ऑन ईमेल and it will be uploaded on the portal. So for example, if it is uploaded on the portal and send you manual notice, email आ रहा है, sorry, hard copy से notice आ गया, then it is not valid service of notice. If they have sent you an email and they have given you hard copy notice या manual notice and they have not uploaded on the portal, then also this is not a valid service of notice. When we talk about DRC01B, 1C, 1D, the issue is of DRC01A and DRC01. That what about a manual notice which has been issued to you in hard copy? The hard copy notice is served to you and the same is not uploaded on the portal. Is it a valid notice or not? You have not received the email, you have received a manual notice and that is uploaded on the portal. Is it a valid service of notice? Tell me yes or no.
In my humble opinion, it is valid service of notice because that has been uploaded on the portal. What if it is uploaded on the portal? So if it is if it is sent to you by hard copy and it is not uploaded on the portal, पोर्टल पर अपलोड नहीं हुआ और आपको सिर्फ हार्ड कॉपी में मिल रहा है, नो, देन इट इज नो. सी in fact I'm forgetting the name of the case law. लास्ट वीक एक जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, that it is the duty of the person to keep on opening this web portal and check whether notice has been issued to you or not. So कल को अगर आप ये कह दें कि साहब मैंने तो पोर्टल खोला नहीं और इसलिए मुझे पता ही नहीं कि आपने मुझे नोटिस भेजा है, so that is not a valid ground. And this is as per the Supreme Court. And whatever Supreme Court says, it is law of the land. Unless you go and contest in another case. Now the issue is whether this DRC 01B, 1C, 1D, can these be issued for previous periods? Means, let's say DRC 01B, क्या फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 19 के लिए इश्यू हो सकता है? Can DRC 01B notice be issued for 17, 18, 18, 19? The answer is yes. Because in these cases, when the new form is prescribed, nowhere it is written that this form is applicable from this year. It's a new form. And the rule through which this form is issued, उसमें भी कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ. So department will issue these forms. Okay. But the deadline and for 73, 74, the deadline will be there. So for 73, 74, the deadline for 73 ends in September. और बल्क में नोटिस आने वाले हैं, ट्रस्ट मी, बल्क में नोटिस आएंगे लास्ट हफ्ते में या 15 दिन में. अपने क्लाइंट्स को बोलकर चलिए अपनी ईमेल्स चेक करते रहें, बल्क में नोटिस आने. और अगर वो बल्क में इशू नहीं कर पाए नोटिस 73 के, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, सरकार 73 की डेट बढ़ा देगी. अगर, फिर बोल रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं, या तो सितंबर के लास्ट के हफ्ते 10 दिन में बल्क में नोटिस आएंगे 17, 18 के. अगर 17, 18 के बल्क में नोटिस नहीं इशू कर पाई सर डिपार्टमेंट, तो सरकार 73 की डेट फर्दर एक्सटेंड करेगी ही करेगी. तीसरी बात, अगर ये दो काम नहीं हुए, वैसे तो दूसरा ही काम हो जाएगा, तो सारे नोटिस वो कन्वर्ट करके 74 में इशू कर देंगे. और 74 की टाइमलाइन तो बढ़नी ही बढ़नी है, उसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती. ओके, लेट्स कम बैक टू अवर डिस्कशन. जीएसटी में इतने नोटिस क्यों आते हैं? We might go for literal meaning, and this is point of dispute. Now there is a tendency of tax avoidance, not evasion. मान लीजिए कई बार आपने कोई सामान खरीदा, सामने वाले ने, सप्लायर ने रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करी. अब तो खैर कम हो गया, पर पहले क्या था, एसएससी कहते थे कोई बात नहीं भाई, 2A में नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, क्लेम तो कर लो, मेरे पे तो बिल है. कई कई बार आपके क्लाइंट्स भी आपसे आर्ग्यू करते होंगे. सो क्लाइंट्स ऑल्सो आर्ग्यू कि साहब हमने पेमेंट कर रखा है, उसने रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं करी, तो मेरी क्या गलती है, लेट मी क्लेम दिस आईटीसी
आई डोंट हैव सो मच ऑफ कैश टू डिस्चार्ज द ड्यूटी। या वो सीजनल डीलर है, उसने कहा साहब अगर मैंने आज कैश पे कर दिया, इफ आई पे कैश टुडे, तो मैं फिर उसका क्रेडिट कब लूंगा, मैं तो डबल कैश दे नहीं सकता। तो दिस इज टैक्स अवॉइडेंस नॉट टैक्स इवेशन, इसलिए भी मिसमैच के नोटिस आए। देन pressure on officers for revenue targets. I hope someone from this group must be from Delhi. तो दिल्ली में अगर आप देखें तो दिल्ली स्टेट जीएसटी की अगर आप बिल्डिंग में जाएंगे तो लिफ्ट्स में फोटो लगे हुए हैं विद नेम डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर, और उन्होंने कितने करोड़ों की रिकवरी पिछले महीने में की। ये हर मंथ चेंज हो जाते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर कोई रिकवरी एजेंट थोड़ी है कि उसको टारगेट दे रखा है, नहीं। लेकिन जब अब अगर ये अनड्यू प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बायस कर रहा है धीरे धीरे ऑफिसर्स को कि भाई उस मुझे भी अपना नाम और फोटो चाहिए। व्हाई शुड आई वेस्ट दैट, लेट मी ब्लॉक समवन्स आईटीसी। आईटीसी ब्लॉक कर देते हैं, डिमांड निकाल दी, डिमांड रिकवरी कर दी। तो इस तरह रेवेन्यू ने टारगेट भी दे रखे हैं ऑफिसर्स को। वी विल डिस्कस कंपल्शन एंड implications. Then frequent amendments, we all know. Confusing judicial pronouncements, या डबल AR pronouncement has been used arbitrarily. ये एक वजह है कि इतने सारे लिटिगेशन है, एक्सेसिव डेलीगेशन है। पहले उतनी पावर नहीं थी। प्लस वन मोर थिंग, सी you might agree with me that there are multiple methods to record a transaction, multiple accounting treatment to record a single transaction. And you will feel that all alternative methods or alternative modes of recording a single transaction are correct. Do you agree with me or not? एक ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के मल्टीपल ट्रीटमेंट हो सकते हैं अकाउंट्स में, और सारे के सारे सही होते हैं। डू यू एग्री विद दिस? यस और नो? एंड ट्रस्ट मी, because there is an alternative method of recording a transaction, all of the method through which you have recorded a transaction can be challenged. बात समझ रहे? What I mean to say? There are multiple methods of recording a single transaction, and because their alternative exists, all of the methods through which a transaction is recorded can be challenged. और यही मूल रूट कॉज है कि मल्टीपल नोटिसेस आते हैं, मल्टीपल इश्यूज बन रहे हैं। सो दिस इज द क्रक्स ऑफ मल्टीपल नोटिसेस, बिकॉज when you see alternative, see what taxpayer try to do whenever he is subjected to notice, he tries to prove his innocence. सर मैंने ना टैक्स इवेजन नहीं करा, I had no intention to evade tax, and this is wrong. This is the incorrect method of starting litigation. The correct method of starting a litigation is that you should challenge why this allegation on me. What are the grounds on which you are levying allegations on me, rather than starting proving your innocence. पर आप ये मानकर चलते हैं कि साहब वी आर इनोसेंट और हमने तो टैक्स चोरी नहीं करी, और हम एलिगेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट इन दिस वे, रिप्लाइंग इन दिस फैशन, आपने एलिगेशन एक्सेप्ट कर ली एंड यू हैव लॉस्ट हाफ ऑफ द केस। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. Freedom to speech is a fundamental right provided to you.
It's a constitutional right, freedom to speech. You do have. But do you have freedom to allegate? Do you have freedom to allegate? You have freedom to speak. You don't have freedom to allegate. So the one who is allegating you, he has to prove his allegations. It is not you who has to defend the allegation. It is the one who is levying allegation has to prove why he is levying his allegations. And this is what litigation is about. You have to change the mindset. You have to change the method through which or the way you are trying to defend your client. आपको अपने क्लाइंट का डिफेंस ही का तरीका ही बदलना है. आपको ये प्रूव नहीं करना कि मेरा क्लाइंट इनोसेंट है जब तक डिपार्टमेंट ये ना प्रूव कर दे कि वो आप पर लांछन एलिगेशंस क्यों लगा रहा है. पहले उसको बताना है कि वो क्यों लगा रहा है आप पर आरोप, तब आपको ये जवाब देना है कि मैं ये आरोप निराधार है. आई होप दिस लाइन इज क्लियर. So the question comes how to practically see ground of notice. Notice generally does not have the details. We will discuss this point, but if notice does not have details, then it is a vague notice, cryptic notice, and it is void ab initio since beginning. आपको ऐसे किसी नोटिस का जवाब नहीं देना जिसमें के आप पर लगाए गए आरोप एक्सप्लेन ना हो कि क्यों लगाए गए हैं. Till they explain why they are alleging. A cryptic notice is not a notice, it has to be quashed. We'll come with this cryptic notice also. Okay? I hope I have answered your query, Aditya ji, at this point. So यहाँ पर सारी बात समझ में आ गई, everyone understood? Then we come to this state authorities. Sometimes state authorities, the officers, especially not the senior officers, they are well versed with the law. But what I say, the ward officer, उनके साथ एक प्रॉब्लम है कि कई बार उनको डिटेल में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती ग्राउंड लेवल पर किस तरह अकाउंटिंग की जा रही है या किस तरह ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जा रही है, या कई बार उनको जीएसटी के फाइनर पॉइंट्स के थ्रू वो अपडेट नहीं होते और इसलिए वहां से नोटिस आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सी everyone is normally familiar with tally, how tally works, how a transaction is recorded and what are its implications. एक ट्रांजेक्शन टैली में रिकॉर्ड करके उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ जाएगा, एवरीवन नोस. और आई बिलीव एवरीवन joining this platform or viewing this video knows. What about busy? So that is another software, accounting software. उसके बारे में थोड़ी कम फैमिलियरिटी है. बट व्हाट अबाउट R3, SAP R3, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स? अगर इस तरह से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जा रही और द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज लाइक दिस, तो जो हम लोग कंसल्टेंट पूरे साल काम कर रहे हैं उनकी भी अंडरस्टैंडिंग कम होती है उस सॉफ्टवेयर की, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग इट डेली. व्हाट अबाउट द ऑफिसर? उस बेचारे ने तो कभी उस पर ट्रेनिंग भी नहीं ली, तो उनको लगता है दैट कहीं ना कहीं फ्रॉड हो रहा है, कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ऐसे करी जा रही है. एंड सी सी आई विल रीड दिस पॉइंट, उसका आंसर भी दूंगा. सबसे ज्यादा एसएमटी 10 में होता है डिस्क्रिपेंसी की जगह डॉक्यूमेंट मांगते हैं. सी एसएमटी 10 स्क्रूटनी नोटिस, they have converted scrutiny and audits to investigation. This is my take on GST.
They have converted scrutiny and audit at par with investigation. जितने डॉक्यूमेंट वो मांगते. Now, let us understand. Every accounting treatment is subject to challenge, or you cannot have an accounting treatment which can go unchallenged. तो चैलेंज के लिए तो तैयार नहीं. एक और बात, हम ऑलमोस्ट रोज ये पढ़ रहे हैं कि आज इस आदमी को पकड़ लिया, 10 आदमी पकड़ लिए, 3 आदमी पकड़ लिए, 500 करोड़ का फ्रॉड है, 1000 करोड़ का फ्रॉड है. ये चीज इतनी ज्यादा मीडिया में आ चुकी है और रोज की न्यूज सुन सुनकर आप सबके दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि दुनिया जहां में जीएसटी में सिर्फ फ्रॉड हो रहे हैं, चोरी हो रही है. और कोई छोटा मोटा अमाउंट किसी का निकल के नहीं आता. किसी को नहीं सुना होगा आपने कि उसे 50 लाख का टैक्स चोरी करा है, 2 करोड़ का टैक्स चोरी करा. नहीं, ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्रॉड्स. इससे माइंडसेट क्या बन गया है, धीरे धीरे डिपार्टमेंट भी ये मानता है दैट कि जितने बिजनेसमैन है सारे चोर हैं. अब एक और बात, जिसका भी सप्लायर ऐसे कहीं पकड़ा जाता है या उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा जाता है, कर देती ना रजिस्ट्रेशन कैंसिल, साथ साथ आपको भी आईटीसी रिवर्सल का नोटिस आ जाता है. एम आई राइट और रॉन्ग? अगर आपके क्लाइंट का रेट्रोस्पेक्टिव जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा गया है, यू विल गेट अ नोटिस फॉर रिवर्सल ऑफ आईटीसी और पे इक्विवेलेंट आईटीसी इन कैश. यस और नो? यस. नाउ आई विल टेल यू समथिंग. इसको जरा ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए इस बात को. जैसे ही आपके क्लाइंट या आपके सप्लायर का रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिव कैंसिल करा, आपको आईटीसी रिवर्सल का नोटिस आ गया. व्हाट इज द इनहेरेंट प्रिजम्पशन हियर? The inherent presumption in these kind of notices is that your supplier has not discharged his liability. Your supplier has not discharged his liability properly. Therefore, but because you have claimed the credit, therefore we are demanding reversal of ITC claim which you have made. Am I right or wrong? ये inherent presumption है नहीं है इस तरह के notices में? Now, what we try to see, how we try to defend this notice. आप ये समझिए, हम इसको डिफेंड अब तक कैसे करते आ रहे हैं. देखिए, हमें थोड़ी अप्रोच बदलनी पड़ेगी. हम इसको डिफेंड कैसे करते हैं कि सर, वी हैव टैक्स इनवॉइस, वी हैड मेड पेमेंट टू दिस पार्टी, वी हैव रिसीव्ड गुड्स or services or supply, we have received supplies, we had invoice, we had paid this, and we have weighing slips also, we have road tax slips also, that vehicle has moved. But did we challenge the allegation that that party has discharged his duty on which you are demanding me? आप अपनी साइड की स्टोरी सुना रहे हो. Please do understand, what you are telling is your side of the story, that you are right, but the notice is on the basis of presumption that that party or supplier S has not discharged the duty. Do we reply in that fashion that that party has discharged his duty? You tell me, हम presumption को challenge कर रहे हैं, नहीं कर रहे? Yes or no? And do you agree with my statement, yes or no? See, my thought process in these notices is that the notice, see, your supplier registration is cancelled retrospectively. Department had issued you a notice that please pay this ITC or reverse your ITC because your supplier registration is cancelled retrospectively. Now, this show cause notice is on the presumption
that your supplier has not discharged his liability. We start telling our side of a story. That, sir, we have invoiced, we have received supplies, we had made sale also, and therefore our party is genuine, and we try to answer everything from our side of a story. Vis-a-vis, this show cause notice has been issued on the presumption that that party has not paid taxes, and we do not challenge this presumption. So those who have said, please explain again. Now, please tell me, do you agree with my statement that we should challenge the presumption on the basis of which this show cause notice has been issued? Because if we prove that that person has paid the taxes, then you cannot have double recovery from me. Am I right or wrong? Just because it's. How do we challenge this? So we have to reply. We have to prove it. How do you challenge a notice? How do you reply to a notice? See, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी साइड की स्टोरी मत सुनाओ. आई एम नॉट सेइंग दैट यू डोंट टेल योर साइड ऑफ स्टोरी, बट you should attack the root cause of this notice. So we have to prove this from our vendor side. And it could be possible that your vendor must have filed its restoration of his GST registration also. It could be possible. So during that period, you should challenge in this way. So whatever you are challenging, whatever way you are drafting your replies, you should challenge the root cause of it. Challenge does not mean that you should always have to go to court and say something. No, you have to understand why this notice has come. Sometimes, see, I'm telling you, sometimes opinions are presented in show cause notice as facts. Sometimes opinions opinions are presented as facts in show cause notice. As an expert, you have to distinguish whether it is a fact or an opinion. Got my point? And yes, see, yes, you are correct. Sometimes, as they issue you show cause notice, they suspend your GST. I have seen many cases. Notice issue करा साथ साथ आपका registration suspend कर दिया. You have to handle it. You have to handle it with care. First, you have to cross-check whether they have the right to cancel your registration on this ground or not. On any ground, they keep on sending notices. In our Delhi, many GST registrations were cancelled because they were not Aadhaar verified, or they had some demand in VAT regime. वैट का ऑर्डर आया, डिमांड थी, सेम ऑफिसर थे, साथ साथ आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया. वी हैव मेट विद द कमिश्नर दिल्ली जीएसटी and we took time. Or today I am in executive member. I am elected executive member of Siltex Bar Association Delhi. So we drafted a petition. We met the principal commissioner. और वहां पर हमने सबमिट भी करी एंड ही एक्सेप्टेड दिस दिस इज अ वैलिड पॉइंट और ये गलत हो रहा है. सो देर आर सी इंडिविजुअली तो आप चैलेंज कर ही रहे हैं नोटिस को. चैलेंज मीन्स यू आर रिप्लाई. चैलेंज का मतलब वो फाइट नहीं करना. वी हैव टू रिप्लाई. सी वी आर whenever we are subjected to notices, we have to leave the presumption that we are at war with the department. We are not at war with the department. It's not a battle also. We have to explain our side of a story. They have to accept our side of a story. And then a final solution has to come. Okay?
So first, if your GST registration is cancelled with the notice itself, then you have to challenge why it has been cancelled. Do they have a right to cancel on these positions? Meet the officers, meet the ward officers. See, मिलने से see what has happened in GST and income tax फेसलेस हो चुका है. हमारी ना कुछ लोगों की आदत कम हो गई है डिपार्टमेंट जाने की. वो ना बदलनी पड़ेगी. अब तो इनकम टैक्स जाना नहीं है, आधा काम तो वैसे ही खत्म हो गया, तो हमारे पास एक ही जगह बच रही है. चलिए, और एमसीए में भी जाना नहीं पड़ता. सो जीएसटी डिपार्टमेंट वार्ड जाने की आदत डाली. गो एंड मीट द ऑफिसर. वो भी बेचारे परेशान है, आजकल उनके पास भी कोई नहीं आता. गो एंड मीट द ऑफिसर एंड उन्हें समझाइए योर साइड ऑफ द स्टोरी, दे विल अंडरस्टैंड. Yes, it is practically possible that even after your reply, department does not pass an order in your favor or against you. They keep things hanging, but you have to meet officer and convince him to pass an order. So let's go ahead. So litigation process, assessment, show cause notices, prosecution. Of course, prosecution goes with the fake invoices, appeals 107. We are not discussing the compounding of offenses. They have reduced the amount also, but we will stick to show cause notices. आप थोड़े से फैक्ट्स बदलिए, आंसर्स बदल जाएंगे. स्लाइड चेंज इन फैक्ट्स. Slight change of facts can change the answer totally. So you have to master the facts. Before coming to replies, you have to master the facts. And see, tax can be collected where four things are clear. Where four things are clear. There is a taxable event, attracting levy. See, in GST it is supplies. Excise it was manufacture. But the collection was at date of removal. Now, you all are aware, tax, who has to pay tax? This should be crystal clear, whether it is forward charge or RCM. What is the rate of tax? And on what value this rate has to be applied? अगर ये चार चीजों में से कोई भी एक चीज मिसिंग है, out of these four any one integrant is missing, तो नोटिस देने भर से कलेक्शन नहीं होगा. Okay. Sometimes what happens, it has, see, you have to accept this also, because someone has said कि client को बुला लेते, सर नहीं समझते क्लाइंट के, क्लाइंट को बुला कर डिमांड कर लेते. let me write something else, because you have pointed it out. Let's say a summon has been issued. A summon has been issued to one of your client. Client visited department. Against that summon, he recorded his statement. Now, can your client, in their statement, what client can confirm? His facts, whatever tax he has paid, and or interpretation of statute. क्या क्या चीजें क्लाइंट रिकॉर्डेड स्टेटमेंट में एक्सेप्ट कर सकता है? टैक्स, what he has paid, and or इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इंटरप्रिटेशन ऑफ टैक्सेशन. क्या क्या चीजें क्लाइंट अपने सम्मन के रिप्लाई में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हुए एक्सेप्ट कर सकता, आप बताइए. Waiting for your answers, please. Facts,
टैक्स पेड, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इन तीनों में से क्या क्या चीजें एक्सेप्ट कर सकता है? तीनों, और एनी वन, और टू आउट ऑफ थ्री? He can only accept facts and tax paid. Only two out of three. Can a client in any recording of a statement, can he accept interpretation? Can his statement be used against him that you have accepted this classification or interpretation and now the tax will be levied at this percentage? Merely because of a statement, can tax be collected? Merely on the basis of a statement, recorded statement against someone which the person has signed, can this give a right to the department to collect money from the person? The answer is no. The answer is no. So whenever, see कई बार गड़बड़ क्या होती है, जब क्लाइंट सम्मन पर जाता है ना, पहली बात तो वो आपको पूरी बात बताता नहीं। मान लीजिए फेक शो कॉज नोटिस का केस आया, या नोटिस आया, सम्मन आया, वो आपसे यही कहता रहता है कि सर, मैं तो इस पार्टी को बहुत साल से जानता हूं, ये जेन्युइन पार्टी है। वहां जाकर वो कुछ और स्टेटमेंट दिया। या सेकंड बात ये है कि आपसे वो ब्रीफिंग लेकर नहीं जाता, खुद ही चला जाता है, और वहां पर वो गलती कर देता है। सो यू शुड गिव देम अ ब्रीफिंग। आपको उन्हें ब्रीफिंग देनी चाहिए थी ना, आपको उन्हें ब्रीफिंग देनी थी। उसने ब्रीफिंग नहीं ली या आपने नहीं दी, टाइम मिसमैच हो गया, कुछ भी हो गया, पर वो वहां जाकर कुछ का कुछ करके आ जाता है। बट डज इट मीन कि वो कुछ गलत स्टेटमेंट दे आया? नाउ डज द रेवेन्यू गेट्स अ राइट टू कलेक्ट मनी बिकॉज ऑफ मिस स्टेटमेंट बाय द टैक्स पेयर? द आंसर इज नो। समटाइम्स ही इज अंडर प्रेशर, समटाइम्स ही इज अंडर प्रेशर। वो घबरा गया ऑफिसर के क्वेश्चन सुनकर, डर जाता है आदमी। And the someone notice says like this, that you will not leave the premises, whatever this way, that way, जब तक ऑफिसर नहीं कहेगा आप वापस नहीं जा सकते। देर आर सो मेनी थिंग्स। सम्मन का जो नोटिस है, जो सम्मन आते हैं, उसे पढ़ के आदमी डर जाता है। रिट्रैक्शन मे बी फाइल्ड, मे नॉट बी फाइल्ड एट दैट टाइम। मैं तो कह रहा हूँ रिट्रैक्शन फाइल ही नहीं करा। लेट्स से वी डोंट फाइल रिट्रैक्शन। कई बार सर्च में भी ऐसा होता है, नाउ सर्च हैपेंस, रेड हैपेन, रात में प्रेशर में उसने कुछ भी लिखवा लिया, merely because of a statement by a taxpayer admitting liability on the basis of interpretation of a statute. That does not give a right to the department to collect money from the person. This is my humble opinion. Those who agree can say yes, those who disagree, they can say no. See, you have all rights to disagree with me. India is a democratic country. Merely a wrong statement does not give right to the department to collect money from you. और कभी डरिए मत अगर गलत स्टेटमेंट दे दी, रिट्रैक्शन फाइल नहीं करा, दस से रिट्रैक्शन भी फाइल नहीं करा, क्या इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी ले लोगे? ओके, लेट्स मूव अहेड। Usually, notices are issued because return is not filed, return is incomplete, or detailed scrutiny is required. ITC. See, ITC is the soul of GST. GST is value added tax. You have to pay tax only on the value addition which you are doing. Now, once you come to a value addition, see, we have a composition scheme, and many people say that. See, because of problems in GST or denying of GST, many people
हैव स्टार्टेड सेइंग दिस कि बॉस कंपोजिशन टाइप स्कीम ले आओ, और क्या करते हैं हम ना, आईटीसी लेंगे ही नहीं, आप हमें कंपोजिशन टाइप स्कीम दे दो। या कुछ लोग ये भी कहने लगे कि सर सारा आरसीएम में डाल दो, वी विल पे कैश एंड देन वी विल क्लेम आईटीसी। ये दो ऑप्शन सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा आते हैं। आई डिसएग्री विद बोथ थिंग्स। इफ वी स्टार्ट पेइंग टैक्सेस इन आरसीएम, लेट्स से सेकंड ऑप्शन, इसका मतलब क्या हुआ? यू वुड बी रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई, और क्लासिफिकेशन के झगड़े डबल हो जाएंगे। अभी तो हम अपनी क्लासिफिकेशन का झगड़ा कर रहे हैं, कल को फिर उसके क्लासिफिकेशन का भी झगड़ा आएगा, वो फिर हमें निपटना पड़ेगा। Let's say there is a misclassification by a party, 18% लगना था उसने 12% लगा दिया। ये मिसक्लासिफिकेशन, हमने तो जितना पैसा पे करा उतना क्रेडिट ले लिया। कल को अगर मिसक्लासिफिकेशन निकला तो झगड़ा उसके सिर पर जाएगा, और अगर हमने आरसीएम में पे कर रखा है तो ये झगड़ा भी हमें झेलना पड़ेगा, दूसरे की गलती का भी दंड मुझे भुगतना पड़ेगा। सो दिस इज इनकरेक्ट। मैं दूसरे की लायबिलिटी को अपने उसमें क्यों लूं? इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैंने आरसीएम में पे कर दिया, लेट्स से मैंने आरसीएम में दूसरे का कैश पे कर दिया, लेट्स से उसने 100 रुपीज में चीज दी, 12 रुपीज टैक्स था, मैंने 12 रुपीज पे कर दिया कैश में, एग्री। अब मैं फॉरवर्ड चार्ज में हूँ। अब मैं मान लीजिए मैंने 150 में चीज बेची, 150 में चीज बेची और मेरी लाइबिलिटी 12% से 18 रुपीज आ गई, तो मैं 12 रुपीज का क्रेडिट लेकर 6 रुपीज जमा करवा दूंगा। एम आई राइट और रॉन्ग? लेकिन तब अगला वाला भी कहेगा भाई मैं इसके थ्रू पेमेंट क्यों करवाऊं, मैं 18 रुपीज खुद पे करूंगा। तो ये तो एंडलेस सिचुएशन बन जाएगी ना। तो आप अपने आउटपुट पर कैश पे करने के बजाय आप अपने इनपुट पर कैश पे करना शुरू कर दोगे। दिस विल क्रिएट अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये भी नहीं हो सकता। सेकेंड, एवरीवन गोज टू कंपोजिशन स्कीम कि नेट पर 1%, 2%, 6%, 5%। तब आप ये भूल जाओ कि आपको मार्जिन 1%, 2% का मिलेगा। आप ये बताइए, सर्विस जो सप्लायर ऑफ सर्विस है उसमें कंपोजिशन स्कीम में जाने पर जीएसटी किस रेट से पे करना है? व्हाट इज द रेट? व्हाट इज द रेट फॉर कंपोजिशन स्कीम इन सर्विस टैक्स, मतलब इन सप्लाई ऑफ सर्विस? इज इट 1%, 2%? इट इज 6%। इट इज 6%। अगर आपको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी तो फिर वो 6% की नहीं मिलेगी सबको, फिर वो 8 to 10% में पहुंच जाएंगे। बात समझ रहे हैं? एंड नो पर्सन कैन बी अलाइव विद हिज सोल किल्ड। ITC soul of GST. You cannot see ITC or GST without its soul. कल्पना नहीं कर सकते आप बिना आईटीसी के आप जीएसटी ले आओ। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब ही क्या हुआ? देयर इज नो वैल्यू एडेड टैक्स। फिर तो लास्ट पॉइंट पेमेंट चल ही रहा था सच। इफ यू रिमेम्बर, सारे यंग तो नहीं हो सकते, कुछ ने तो सेल टैक्स में भी काम करा होगा वैट से पहले। वहां पर एक फॉर्म देना होता था लास्ट पॉइंट सेल का, दिल्ली में फॉर्म 35 था, रजिस्टर्ड डीलर टू रजिस्टर सप्लाई करनी होती थी, फॉर्म 35 जमा करना था। लास्ट पॉइंट में जब वो रेसिपेंट जो एंड यूजर था उस पर पॉइंट पर टैक्स लग जाता था। तो फिर तो ऐसे ही स्कीम आ जाएगी। तो ये नहीं हो सकता। आईटीसी इज सोल ऑफ जीएसटी। कभी भी कोई ये कहे कि आईटीसी खत्म कर दो, सिर्फ जीएसटी रख ले लो लास्ट पॉइंट पर, यू शुड चैलेंज इट, बिकॉज दैट इज प्रोसीजरली रॉन्ग। थॉट प्रोसेस से ही गलत है।
The law and age on wisdom says for procedural mistakes, procedural errors, a substantial benefit or substantial right cannot be denied to you. प्रोसीजरल मिस्टेक करने से या प्रोसीजर को पूरी तरह फॉलो ना करने से जो लॉ में स्टैच्यूटरी राइट आपको दिए गए हैं या सब्सटेंशियल राइट जो आपको दिए गए हैं, दोज कैन नॉट बी डिनाइड. And ITC is one of those statutory rights to you which cannot be denied because correct procedure has not been followed. Though automatic softwares, the GST portal does not accept it, but that does not mean that you have to accept whatever the pollution portal says. You have the right to challenge it. You have the right to speak against it. Okay. So, reasons why these show cause notices come. Now, a shortfall is detected by the tax authority, again for procedural lapse. You have not followed the procedure. See, there are so many advisories which keep on coming. Let me ask you something before this. Notification. If a notification is issued, is it applicable on department officer, assessee, tribunal? Is this applicable on all three or one or two? Notification. Notification is applicable on officer, department, assessee, and or tribunal. Let's presume tribunal is there. या हाई कोर्ट, लेट्स से हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल तो है नहीं, हाई कोर्ट की बात कर लेते हैं. Okay. Now, what about circular? I would request again not to post anything in Q&A or record anything. What about circular? Is it applicable on department, assessee, and the High Court or High Court or Supreme Court? Circular is applicable only on department, assessee, High Court. Except two answers, all are correct. Circular is binding only on the department. Circular is not applicable on me. Sorry, circular is not binding on me. Circular is not binding on me. Circular is applicable only on the department. I have a choice to follow circular or not to follow circular. I can deviate from the circular. If the position is beneficial to me, you can't force me to follow a circular. What about advisories issued by state authorities? Is it binding on me, High Court? What about GST advisories issued again and again? Are they binding on me? See, the word itself is advisory. It is advice. Can any advice be binding on anyone? नाम से ही लिखा है भाई, ये एडवाइस है. एडवाइस कैन नॉट बी बाइंडिंग. और एडवाइजरी कभी भी डिपार्टमेंट के लिए नहीं होती. एडवाइजरीज आर ऑलवेज फॉर द एसएससी. नाउ राजस्थान has issued an advisory. Rajasthan state had issued an advisory last year.
कि भैया आप जीएसटी रिटर्न में ये ट्रीटमेंट इस तरह करोगे, व्हाई दे इशूड दिस काइंड ऑफ एडवाइजरी? क्योंकि भाई अगर आप इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हो, इन एडवाइजरी इटसेल्फ दे से कि भाई इस तरह का ट्रीटमेंट आप नहीं करते हो, इसकी वजह से हमें सेंटर से पैसा कम मिलता है, आप इस तरह ट्रीटमेंट करो जिससे हमें सेंटर से पैसा सही मिले। सर आपकी स्टेट को कम पैसा मिल रहा है फ्रॉम द सेंटर, इसके लिए आप बर्डन कि आपको पैसा ज्यादा मिले या सही मिले, इसके लिए आप बर्डन एसएससी पर डाल सकते हैं। यू जस्ट टेल मी कि आपको सही पैसा मिले, क्या इसका बर्डन एसएससी पर डाल सकते हैं? एसएससी ने कम टैक्स जमा करा, इसका बर्डन तो एसएससी पर आ सकता है। लेकिन आपको दो स्टेट और सेंटर में जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो आपकी स्टेट को ज्यादा मिले, इसके लिए आप मुझे पिनलाइज कर सकते हो, नहीं नहीं ये एंट्री इस तरह दिखाओ। सो अगर मेरा नेट में आंसर सेम आता है और मेरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत है, या मैं अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, लेट्स से आई हैव 100 rupees ऑफ आईटीसी फॉर दिस मंथ, 30 rupees is blocked in 17.5. Now I can show this figure in two ways. I can show 100 rupees total ITC less reversal 17.5, 30 rupees net claimed 70 rupees. Or alternatively, I can simply say net claimed ITC 70 rupees. Is there any loss to the department? Is there any loss to the department? Now, yes, there could be issues while accounting between state and center कि वो 30 rupees में से वो 30 पूरा का पूरा राजस्थान स्टेट को मिलना था, और अदरवाइज उन्होंने उसका 30 का पूरा 30 ना देकर 15 दे दिया। दिस कुड बी पॉसिबल बिकॉज ऑफ योर अकाउंटिंग ट्रीट, पर इससे कोई रेवेन्यू लॉस हुआ है? बिकॉज ऑफ माई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज देयर एनी लॉस टू द रेवेन्यू? नो, मेरी तरफ से तो पूरा पैसा गया है ना। I was obliged to claim only 70. There is nowhere written that I have to show 100 minus 30 and then net claim 70. Is such thing written in any GST provision कि मुझे 17.5 का डिस्क्लोजर अलग से देना है? Is there anything written like this? No. But because you are getting less money from center, now you are forcing me to do additional compliance or additional disclosure. So, is this right or wrong? Is this right or wrong? Morally, morally, is this right or wrong? I believe morally they don't have, ethically they don't have any right to issue such kind of advisory because they are getting less money. But what happens practically? Because you have not followed advisory, and advisory is binding on the officer. Such kind of advisory, are these binding on the officer? No. See, these advisories are for filing of GST returns. An officer does not file his return. And again, this is word advisory. It is not even a circular. So they are giving us advice. But because of incorrect treatment of this advisory, or if you have not followed this advisory in totality, can GST department issue you a notice or not?
Can GST department issue you a notice that you have not followed this advisory and your disclosures are not proper in your GST returns? Can department issue you a notice? सर जल्दी जल्दी बताओ, फिर मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ. Technically, they cannot issue you a notice. Practically, I have handled so many notices. और आई हैव एडवाइज मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स कि भैया ये नोटिस गलत है, इसका रिप्लाई इस तरह देता. फॉर नॉट फॉलोइंग एडवाइजरी, many notices have been issued. Now you understand the legality of these notice. These are not valid notice. Now, while drafting note reply to these kind of notice, see what see that's what I'm coming again and again to you. If you receive such kind of notice before this discussion, you might be tempted to prove your innocence. I agree, sir. It's not a valid one. See, let's presume. भाई मैं सबके लिए तो नहीं कह रहा, बट आप में से एक दो लोग तो ऐसे होंगे जो आज के डिस्कशन से पहले अगर ऐसा एडवाइजरी के अगेंस्ट नोटिस आया होता, दे वुड हैव बीन टेम्प्टेड टू प्रूव इनोसेंस ऑफ योर क्लाइंट. कि सर अगर ये ऊपर दिखाते नीचे दिखाते फिर भी तो नेट शेल में हम उतना ही क्लेम कर रहे हैं, देयर इज नो लॉस टू द रेवेन्यू. आप इस तरह रिप्लाई बनाते नहीं बनाते? डू यू एग्री विद दिस और नॉट? You would have tried to exhibit your innocence of your client, honesty of the client, no loss to the revenue. These would have been your basic grounds. But the basis premise of this notice is that they don't have any legal position to issue such notice. So first thing you should, rather than proving innocence of your client, you have to challenge that the officer does not have a right to issue notice on this point. ये उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है कि वो ऑफिसर आपको एडवाइजरी फॉलो ना करने का नोटिस इशू करे. Am I clear in the thought process? Anyone who wants to disagree at this point? Anyone who disagree with me at this point? सर हमें ना नोटिस के रिप्लाई बनाकर जस्ट देने नहीं है, हमें नोटिस इशू करने की पावर भी चैलेंज करनी है कि साहब ये नोटिस आपने इशू तो कर दिया पर इसकी पावर तो आपके पास है ही नहीं, आप इशू ही नहीं कर सकते. फिर भी अगर वो अड़ जाता है नोटिस पर, देन यू गिव अ रिप्लाई. पर पहले आपको उसको याद दिलाना है कि भैया आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है. You don't have the power to issue such kind of notices. Get the notice dropped on this point. Do not jump to prove innocence of your client. No. क्लाइंट आपका इनोसेंट है, एडिशंस तो वैसे भी नहीं होंगे. क्लाइंट तो इनोसेंट है, वो एडिशन तो वैसे भी नहीं होने. बट वंस यू enter into process of replying to notices, that goes to next level. Very valid point. Very valid point. So we have got a point. Sometimes challenging the notice on validity hurts the ego of the officer. How to handle such situation? I agree with this point. It's a valid point. You have to be diplomatic. You have to be diplomatic. आप उसमें पॉइंट वन में चैलेंज नोटिस कर दीजिए. देन सेकंड पॉइंट में आप अपने क्लाइंट की इनोसेंस प्रूव करिए. मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह, देखो
प्रैक्टिस के ना दो रूप हैं। एक है वार्ड की प्रैक्टिस, जिसमें आप वार्ड ऑफिसर के साथ होते हो। उसका ईगो हर्ट होता है क्योंकि वो इमोशनली अटैच होता है नोटिस से। एक होती है अपील्स की प्रैक्टिस, जो मैं करता हूँ। मैं वार्ड में नहीं जाता। जो अपीलेट अथॉरिटी बैठी होती है, वो भी इमोशनली अटैच नहीं होती नोटिस से, बिकॉज दे हैव नॉट इशूड दिस नोटिस। तो वहां पर हमें रिलीफ मिल जाता है। आप जब पहली बार रिप्लाई करें नोटिस का, तो आप सारे पॉइंट्स लेकर चले। जब आप अपील में जाएंगे, तो आपको यहाँ पर अगर आपके अगेंस्ट भी ऑर्डर पास हो गया, डिमांड ऑर्डर आ जाता है, तो आप वहां पर ये रिलीफ ले आइए। आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है ऑफिसर का, क्योंकि उस ऑफिसर के पास सिर्फ आपका एक क्लाइंट नहीं होगा। लेट्स से एक वार्ड में आपकी 20 फाइलें हैं, 20 में से एक क्लाइंट ऐसा लिखा। अब पर्सनल बातचीत में उससे ये कहिए कि साहब, मैं तो सिर्फ ये नीचे वाला कह रहा था, बट पता नहीं कहाँ से किसी कंसल्टेंट से उसने राय ले ली और मुझसे ये लिखवा दिया। मैं तो नहीं कहना चाह रहा था, पर उसने कहा कि साहब, अथॉरिटी नहीं है। मैं आपकी बात चैलेंज नहीं करा, लेकिन पता नहीं कहाँ से उसने ले आया। तो आपने अपनी बात भी कह दी और स्थिति भी नहीं बिगड़ी। सेकेंड थिंग, एज अ प्रैक्टिशनर, हालांकि ये बात का पॉइंट है, एज ए प्रैक्टिशनर वी हैव टू बी सॉफ्ट स्पोकन, बट words should be very harsh or crude. It can be crude, it can be diplomatic, as you like. बातचीत में बड़ा मीठा बोलना है। बातचीत में बहुत मीठा बोलना है, बड़े प्यार से बात करनी है सबसे। कागजों में जो लिखना है वही लिखना है। बात को घुमाया जा सकता है, लेकिन लिखा वही जाएगा जो हमें सही लगता है। यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक। आप ऑडिट रिपोर्ट अगर साइन करते, इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और CMA CWA, तो जब आप लिखते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजों के आप डिस्क्लेमर डलवा देते हैं या डिस्क्लोजर डलवा देते हैं। आप ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई नहीं करते। यू गो टू एन अंडरस्टैंडिंग वेर यू से, ओके, यू गिव अ डिस्क्लेमर, वी आर नॉट क्वालिफाइंग, बट वी विल गो विद द डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर। यू राइट इट इन डायरेक्टर्स, यू राइट इन नोट्स ऑफ अकाउंट्स, आई एम नॉट क्वालिफाइंग, बट डिस्क्लोजर इज रीनेड। So that is the way where you have to do these things. Okay. If ego comes in between and GST number suspended, business is disturbed and then client take it otherwise. सर, यहाँ बात हमारी ईगो की तो आ ही नहीं रही। हमारे पास तो ईगो है ही नहीं, वी डोंट हैव एनी ईगो। हमारे पास ईगो नहीं है। ईगो किसकी है? ऑफिसर की। पर जो लोग भी प्रैक्टिस में हैं, जैसे VK बोरा साहब भी सुन रहे हैं यहाँ पर सेमिनार, और एक दो को और मैं जानता हूँ, अगर आप रेगुलरली ऑफिसर से मिलते हैं, रेगुलरली वार्ड में जाते हैं, आपकी हाय हेलो है, आप उससे रेगुलरली केस करवाते हैं, तो आपको लगता है कि आपकी और उसकी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ईगो हो सकती है? ईगो तो उन्हीं लोगों की खराब होती है या होती है जो डिपार्टमेंट जाते नहीं, ऑफिसर से मिलते नहीं। अगर आप रेगुलरली डिपार्टमेंट जा रहे हैं, ऑफिसर से मिल रहे हैं, तो आपके संबंध पहले से ही बने हुए हैं। आपको पता है इस ऑफिसर को किस तरह से रिप्लाई देना है, किस तरह का रिप्लाई वो एक्सेप्ट करेगा। आपको सब कुछ पता है डिपार्टमेंट का इन एंड आउट। यहाँ पर ये प्रैक्टिकल आंसर अगर मैंने गलत दिया हो, तो प्लीज कोई भी मुझे रेक्टिफाई कर सकता है कि जो लोग डिपार्टमेंट रोज जाते हैं, उनके साथ कभी ईगो का क्वेश्चन कभी नहीं आता। I had faced one case where scrutiny 3A, where I was contending on basis of circular how to deal with cases, but the officer answered the act is bigger than circular. There was, sir, circulars are binding on the officer. He does not have a right to reject. If he rejects it, then you can win in appeal.
and you can use the case non-application of might. Don't worry on this. Okay. सर, बट कभी कभी ऑफिसर किसी और पर्पज है, स्पेसिफिक क्लाइंट के पीछे पड़ा हुआ होता है, बात बात में नोटिस दे रहा होता है। सर, क्लाइंट से उसकी लड़ाई हो सकती है, आपसे थोड़ी है लड़ाई। आपने थोड़ी चीजें बिगाड़ी। द क्वेश्चन वॉज कि सस्पेंड हो गया रजिस्ट्रेशन। अगर हमसे हैंडल नहीं हो रहा तो हम किसी सीनियर को इन्वॉल्व कर लेते। हमें हमारे पास कोई ईगो नहीं, कोई शर्म नहीं। कई बार चीजें होती हैं, किसी ऑफिसर से हमारी भी ट्यूनिंग नहीं बन रही होती, तो किसी को साथ में ले जाते। अल्टीमेटली तो काम कराना आना चाहिए आज की डेट। देखो, वेबिनार है, मैं इतना ही बोलूंगा, काम कराना आना चाहिए। और सब काम होते हैं। सेमिनार होता तो कुछ और समझाता है डिटेल में। वेबिनार में सिर्फ इतना ही कि हमको अगर चीज ऐसी बिगड़ गई है तो किसी सीनियर को इन्वॉल्व कर लो, किसी सीनियर के साथ चले जाओ। सीनियर कोई चार्जेस नहीं ले रहे होते। जब आप सीनियर बन जाओगे तो आपको भी कई केसेस में जाना पड़ेगा जूनियर्स के साथ। ठीक है, क्योंकि आपके साथ भी कोई गया है, इसलिए आप भी नीचे वालों के साथ जाए। उस तरफ जाना होता है। और उन्हीं सीनियर्स को लेकर जाते हैं लोग जो वार्ड में रेगुलरली जा रहे होते हैं, जो रोज डिपार्टमेंट विजिट करते हैं। रेगुलरली, रोज तो नहीं कह रहा, रेगुलरली विजिट करते हैं। वो सारे ऑफिसर्स का इन आउट जानते हैं, सबसे उनके संबंध होते हैं। एंड इफ यू हैव गुड रिलेशनशिप इन वार्ड, तो आपके क्लाइंट को वैसे भी नोटिस नहीं आते। वो देख लेते हैं कि यार ये इस सीए साहब का या इस वकील साहब का क्लाइंट है। कई बार तो वो नोटिस देते ही नहीं, वो वकील साहब से ही बात कर लेते हैं, जूनियर से बात कर लेते हैं कि जी आपके इसको इस तरह की इंफॉर्मेशन आई हुई है, बताइए क्या करना है। ओके। मेंटेन गुड रिलेशनशिप इन वार्ड्स। दिस इज नंबर वन थिंग टू डू अ प्रैक्टिस इन टैक्स प्रोफेशन। अगर वार्ड में मधुर संबंध नहीं है तो प्रैक्टिस नहीं चलने वाली। और जिसके क्लाइंट को बहुत ज्यादा नोटिस आते हैं, उसकी प्रैक्टिस वैसे भी खराब हो जाती है। ठीक है। चलो फिर कभी किसी और सेशन में ये डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स विदाउट रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड नहीं करने दूंगा फिर। चलिए। ऑडिट ऑब्जेक्शन। सी, आपके पास एक पार्टी आती है ऑडिट करने। ऑडिट किया, आप उसको रिप्लाई दीजिए, वहीं पैरा ड्रॉप करवा लीजिए, दैट इज द बेस्ट थिंग। बट इफ ऑडिट पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट योर रिप्लाई, if it does not accept the reply, then they will issue their report. Report will go to the ward, then notice will be issued by the ward officer. Again, the ball goes into ward officer कि वार्ड में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है तो वहां पर आप ड्रॉप करवा लेंगे। इट कुड बी पॉसिबल कि आप ऑडिट पार्टी से अपने फेवर में रिप्लाई ड्रॉप नहीं करवा सकते। तो आप क्या करेंगे बाद में? यू विल दैट ऑडिट रिपोर्ट विल बी फाइनलाइज। और ऑडिट रिपोर्ट में बताता हूँ क्या होता है। They will issue you a draft audit report. You will submit them a reply, and you should demand a personal hearing. Once you go for personal hearing, once you go for personal hearing, तो आपको आप वहां पर then they will finalize the report. आप हमेशा पर्सनल हियरिंग मांगिए, इवन इन केस ऑफ ऑडिट। पर्सनल हियरिंग रिप्लाई इज नॉट इक्वल टू पर्सनल हियरिंग, then they will drop your audit para, they will give you a final report, clean report. Let's say they do not give you a clean report. Out of 10 points, they accepted 8. 2 पॉइंट पर आपकी उनकी सहमति नहीं बनती, so they will issue a qualified report to you. What will happen? Then on those 2 points, ward officer will issue you a notice. अब वो कौन सा ऑफिसर होगा? In case of multiple officers, you have multiple branches, तो या तो वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से नोटिस आएगा उस ऑफिसर से, और जहां पर सबसे ज्यादा डिमांड है, दैट कुड बी योर ऑफिसर हु वुड बी इशूइंग यू अ नोटिस। फॉर एग्जांपल, माय प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज लोकेटेड एट दिल्ली। आई हैव टू ब्रांचेस, नोएडा एंड गुरुग्राम, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। नाउ आई हैव 3 officers.
Now, either Delhi officer will issue me a notice against this audit report, or let's say ज्यादा डिमांड नोएडा में, गुरुग्राम में ज्यादा डिमांड नहीं, हाईएस्ट डिमांड गुरु नोएडा से, तो either Delhi or Noida, these two could be the officer who would be issuing me a notice. Now, there you have to satisfy the officer. If you are able to satisfy ward officer in case of audit, then the proceeding will be dropped. नहीं हुई तो दिक्कत. Now, third thing, preventive, anti-evasion. अब डीजीजीआई से नोटिस आ गया, सेंट्रल, डीजीजीआई सेंट्रल से नोटिस क्या होता है, सीधा सम्मन ही भेजते हैं साहब. और a notice or summon is issued by state anti-evasion. सी स्टेट इसको एंटीवेशन बोल रही है, इंटेलिजेंस विंग बोल देती है कई बार, और सेंट्रल से डीजीजीआई. अब वहां से नोटिस आ गया. नाउ इन दिस केस सम्मन आ गया. द इनहेरेंट presumption is that your client is a evader, tax evader. इनसे नोटिस या सम्मन आने का मतलब है कि इनकी एक presumption है that you have evaded tax. देखिए, वार्ड जो है वो रेवेन्यू सेंटर है डिपार्टमेंट के लिए, गवर्नमेंट के लिए वो रेवेन्यू सेंटर है. दे जनरेट होल ऑफ द अमाउंट. विज़ डीजीजीआई, एंटीवेशन, दीज आर प्रॉफिट सेंटर्स. दीज आर प्रॉफिट सेंटर्स. यहां पर जाकर बातचीत नहीं होती. नॉर्मली यहां पर यू विल एंड अप पेइंग टैक्सेस और रिवर्सिंग योर आईटीसी. यहां से जब भी सम्मन आते हैं, आई एम टेलिंग यू विद माय एक्सपीरियंस, क्लाइंट हमेशा डिनाई करता है कि साहब मैंने तो कोई चोरी नहीं करी, मैं तो इस पार्टी को साल से जानता हूँ, 20 साल से जानता हूँ. एंड यू प्रिपेयर योर डिफेंस इन दैट. As soon as he enters the room of the officer, he spills the beans. ऑफिसर के सामने जाते ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के नाम पर वो सब एक्सेप्ट कर लेता है कि जी मैंने तो कभी सप्लाई ली नहीं, मैंने तो सिर्फ इससे बिल लिया. आपकी सारी मेहनत, जो आपने पूरा डिफेंस तैयार करा, सारी मेहनत सब बर्बाद हो जाती है. और फिर DRC 03 के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं. बट लेट्स प्रिज्यूम, लेट्स प्रिज्यूम you train your you train your क्लाइंट प्रॉपरली, और एक्चुअली उसने चोरी नहीं करी, उसने जेन्युइन परचेज करी है. लेट्स से योर क्लाइंट इज मिस्टर ए. मिस्टर ए हैज रिसीव्ड सप्लाई फ्रॉम मिस्टर एक्स. मिस्टर एक्स हैज रिसीव्ड सप्लाई फ्रॉम मिस्टर वाई. मिस्टर वाई is arrested by DGGI 3 months before. Mr. Y has said that he is not a he is only bill operator. Mr. Y is behind bar or in the custody of DGGI. They have issued notices, and now Mr. X, registration of Mr. X is cancelled. Now the registration of Mr. X is cancelled retrospectively because he has received supply from Mr. Y. Now, because his registration is cancelled retrospectively, now a summon has been issued to your client Mr. A कि बॉस आपकी इस डेट में पेशी है, bring all the records, all the bank transactions of these many parties where Mr. X was involved. Now, for you, Mr. X was a genuine party, you have been dealing with him. Now, how to handle these kind of situations? ये अवतार जनरेट हुआ फॉर दिस केस स्टडी. ऐसे ही आते हैं ना नोटिस. ऐसे ही आते नहीं आते नोटिस? यस और नो? सम्मन ऐसे ही आते हैं डीजीजीआई से, राइट और रॉन्ग?
ऐसे ही आते हैं। अब इन केसेस में क्या करें? हाउ टू हैंडल दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस व्हेन एंड योर क्लाइंट इज राइट इन दीज केसेस, कि भाई वो जेन्युइन पार्टी थी और उसने जेन्युइनली परचेस करी है। नाउ दैट एक्स might be involved in wrongdoings. To reduce his output tax liability, he has, let's presume कि भैया वो पॉइंट भी सही है कि X has used wrong ITC to reduce his liability or for non-payment of his liability. पर आप सही थे, आपने जेन्युइन परचेज करी, आपने जेन्युइनली टैक्स पे करा है उस पार्टी को। हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, हाउ टू ट्रेन योर क्लाइंट? फर्स्ट थिंग यू हैव टू ट्रेन योर क्लाइंट। देखो, प्रिवेंटिव एंटीवेशन में होता क्या है, इसमें दो तरह से नोटिस आते हैं, इसको जरा ध्यान से समझिए हाउ प्रैक्टिकली दीज थिंग्स आर डन। आपको सुबह 10:30 का टाइम दे दिया जाएगा। थिंग्स आर सेम इन सर्विसेज ऑल्सो। पहले 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 मुझे बोलना तो मैं भूल जाऊंगा फिर। सी, आपके क्लाइंट को 10:30 का टाइम दे दिया, दैट यू विजिट ऑन दिस ऑफिस 10:30 शाम। डीजीजीआई में पहुंच गए या एंटीवेशन में पहुंच गए, जहां भी रेलिवेंट। अब आप जैसे ही पहुंचे तो बहुत लोग बैठे हुए हैं। अब आपसे कह दिया जरा फोन साइलेंट कर दो। तो ये साइकोलॉजिकल गेम्स कैसे खेले जाते हैं, पहले ये समझ लीजिए, फिर प्रैक्टिकली बताऊंगा क्या करना है। आप अगर इतनी बात भी अपने क्लाइंट को बता देंगे कि साइकोलॉजिकल गेम आपसे इस तरह खेला जाएगा, तो भी वो तैयार होकर जाएगा इन गेम्स के लिए। तो जैसे ही वहां पहुंचते तो आपको बाहर रिसेप्शन के साथ में बैठा दिया जाता है, या बाहर चेयर्स पड़ी वहां बैठ गया। रिसेप्शन नहीं है तो जिस फ्लोर पर आप बैठे हैं वहीं चेयर्स लगी हुई है स्टील की, आप बैठ गए। और अब जितने भी लोग आएंगे जाएंगे आपको घूरते हुए जा रहे हैं, घूरते हुए जाएंगे। आपको 12:30 बजे के आसपास 2 घंटे वेट कराया आपको, और 2 घंटे आपको अंदर बुला लेते हैं। आपसे कहेंगे फोन बाहर जमा कर दो। फोन आपने बाहर जमा कर दिया रिसेप्शन के पास, आपको अंदर बुला लिया। अंदर बुलाते ही जो ऑफिसर है वो आपसे बड़े मीठे प्यार से बात करता है। आपको लगेगा इससे बड़ा देवता आदमी तो कोई है नहीं, अच्छे से प्यार से बात करेगा। और वो कहेगा कि जी आपका केस तो बिगड़ा हुआ है, बिकॉज इस फलानी पार्टी तो जेल में है, और या डीजीजीआई ने अरेस्ट कर लिया था, और इस पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया कि उसने एक्स को इतनी जगह करा, और एक्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया। वो आपसे ऐसे ही बोल देंगे, एक्स ने भी एक्सेप्ट कर रखा है कि उसने इसी से XYZ पार्टी को, मतलब एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया ABCDE को मैंने फर्जी बिल दी है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट वो बोल देंगे ABCDE को बिल दिए हैं, और हमने तो जी बी को भी बुलाया था, सी को भी बुलाया था, डी को भी बुलाया था, ई को भी बुलाया था, और BCDE सब लिख कर दे चुके हैं कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि एक्स बोगस बिलिंग में इन्वॉल्व था, और सबने टैक्स भी जमा कर दिया। अब मिस्टर ए आप ही बचे हैं। अब आप बताओ आपके साथ क्या करना है। अब आप इस थॉट प्रोसेस में ही हो कि क्या सुनूं क्या सोचूं। अब वो 5 पार्टी के नाम बता रहे हैं जो शहर की टॉप पार्टी है, वो कह रही है जी हमने एक्सेप्ट कर लिया, हमने टैक्स पे कर दिया। अब आप बचे हो, आप छोटे वेंडर हो। अब ये सोच रहे हो कि भाई इतनी बड़ी पार्टी ने पैसा जमा कर दिया, और इसका तो 20 करोड़ 50 करोड़ का नोटिस था, मेरा तो जी 20 लाख का है, तो मैं क्या करूं। इतना सोच रहे हो, तभी वो कहते हैं चलो अच्छा मैं आपको साहब से मिलवा देता हूँ। अब ये तो साहब के पास ले गए, साहब बड़े से कमरे में बैठे, उनके साथ 2-4 लोग और भी बैठे हैं, वो जाते ही मिलवाएंगे, नॉक करेंगे कि सर ये उस पार्टी से आए हैं। अब वो साहब आपको गुस्से से घूरते हैं, या वो कुछ नहीं बोलते, कोई और घूर कर देखता है और कहता है जी अच्छा ये वो पार्टी है, इसने तो सारी बोगस बिलिंग ले रखी है, इसके तो और केस खंगालो, इसने पता नहीं किस किस पार्टी से ले रखी है, इसको तो अरेस्ट कर लो, इसका तो अरेस्ट होगा, छोड़ दो इससे, तो जो लिखवाना लिखवा लो, ये तो अरेस्ट होगा। अब जो है क्लाइंट वो डर जाता है, इतनी बात बुरी तरह डर जाता है। अब क्लाइंट का एक अवतार समझिए, क्लाइंट कैसा होता है। नॉर्मली जो बिजनेसमैन है, जो इंडस्ट्री है, वो तो 1,000 करोड़ के ऊपर की है, उनको तो नोटिस जाते नहीं। नॉर्मली जो नोटिस जाते हैं वो इस तरह के क्लाइंट को जाते हैं जिनका टर्नओवर
50 करोड़ से 200 करोड़ के बीच का होता है। इस तरह की पार्टीज को ज्यादा नोटिस इस तरह के संबंध जाते जाते हैं। अब जो इस तरह की पार्टी है नॉर्मली अगर समझिए तो जो क्लाइंट होता है, बिजनेसमैन होता है, वो नॉर्मली 50 की एज का मिडिल क्लास मिडिल एजेड आदमी हो। उसको अपनी इज्जत की बहुत परवाह होती है। वो सोचता है क्या यार ये मैं परेशान हो गया। फिर वो उनको बाहर लाते, वहां से मिलवाकर थोड़ा सा उनसे एक दो क्वेश्चन पूछेंगे, तब तक एक सवा बज जाएगा। उनसे कहेंगे ऐसा है जी, अब आप लंच करने चले जाओ, लंच के बाद आपसे मिलेंगे, मेरा भी लंच टाइम हुआ है। अब आप फोन वोन उठाकर आप रिसेप्शन से फोन लेकर बाहर गए। अब क्या ही खाने का मन करेगा। सच्चाई तो ये है कि क्या ही खाने का मन करेगा। घर पर बता कर आए हैं संबंध में है, अब आप घर पे फोन करेंगे, हाँ जी अभी तक तो ठीक चल रहा है। अब आवाज आपकी धीमे हो चुकी है, दुखी हो। बिजनेस दुकान की तो छोड़ दो, वैसे ही बहुत दुखी हो। घर वालों को बताया है कि जी हाँ बात तो हो रही है, निपटाने की सोच रहे हैं। इसी बीच में आप कुछ थोड़ा बहुत खाते हो, नहीं खाते, वापस अपने टाइम पर पहुंच जाते हो। 2 बजे तक आप वापस अंदर पहुंच जाते हो। फिर वो आपका फोन रखवा लेते हैं और फिर आपसे 3 साढ़े 3 बजे वो मिलते हैं। 3 साढ़े 3 बजे बैठेंगे, आपसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे, तब तक आपको चाय भी पिलवा दी जाती है 4 बजे। उसके बाद जैसे जैसे 6 बजने लगते हैं, आपके दिल में घबराहट आने लगती है कि यार ये मुझे वापस जाने देगा नहीं जाने देगा। सी we'll try to speak in English more, but it's a mix of it, and some things are explained in my native language more. कुछ चीजें अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही समझाई जा सकती हैं। We'll try to. So by the time it becomes 6:30, now the fear grabs the mind of the client whether they will allow me to return or not. मैं घर जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, इसी में वो फंस जाता। और तब तक उसके एक दो दोस्त आकर, जो कुलीग्स होते हैं, वो भी बोल देते हैं अच्छा ये वही है, इसको तो रोक ही लो, डोंट अलाउ हिम टू गो होम। एक दो लोग आकर बोलते थे। तब आप प्रेशर में आ जाते एंड यू एक्सेप्ट वट एवर दे से बिकॉज यू वॉन्ट टू गो होम। दिस इज द माइंड गेम विच इज बीइंग played, and you end up, or your client end up accepting all liabilities which are not genuine, and they end up paying taxes. In second case, अक्सर टाइम दिया जाता है सम्मन्स में 4:30 PM, and this is second most popular method, गिविंग टाइम ऑफ 4:30 और 4 o'clock इन इवनिंग। जब आप पहुंचे ही 4:30 बजे हो और आपकी हियरिंग ही 5:30 पर शुरू होती है, तो 8 साढ़े 8 बज चुके हो। एंड देन द फियर ग्रैप्स योर माइंड कि मुझे घर जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। और दोनों ही केसेस में फैमिली पैनिक मोड में आ जाती है। फैमिली इज इन पैनिक मोड, बोथ ऑफ द केसेस। वो कंसल्टेंट को फोन करते हैं, कहते हैं कंसल्टेंट प्लीज आप, जीएसटी का इशू है, आप डीजीजीआई चले जाओ, आप एंटीवेशन चले जाओ। हस्बैंड फोन नहीं उठा रहे, अंदर बैठा रखा। और अदरवाइज ऑल्सो दे स्टार्ट कॉन्टेक्टिंग friends or relatives, the family, your wife, mother, whatever, sister, daughter, they come in panic mode कि बॉस हस्बैंड वहां फंस गए हैं। अब दोस्तों को बोलना पड़ेगा कि भाई उनको घर लेकर आ। एंड विदाउट योर मिस्टेक कहते हैं जी 20 लाख रुपए टैक्स ही जमा करना है ना, कोई बात नहीं, बहुत कमाया है जी जीवन में, बहुत कमाया है, आपसे ज्यादा तो नहीं है ना, 20 लाख रुपए जमा कर। And then, because of this psychological game and the panic button, you end up paying taxes, or your client end up paying taxes. Stories more or less इन दो स्टोरीज में कवर हो जाती हैं।
प्लस माइनस 5-10% होगा। आप में से किसी का क्लाइंट अगर डीजीजीआई एंटीवेशन गया है तो बता दो, स्टोरीज आर सिमिलर और नॉट? यस और नो? स्टोरीज आर सिमिलर और नॉट? See, CA as a consultant is not authorized to be representative of corporate client or visit DGGI or Antivision. Only the officer authorized by board of a corporate or a director is authorized representative. They should go. Okay. So in case of summon, only summoned person is allowed. Yes, a advocate can accompany. Advocate can accompany, but he can be only the visual distance. He cannot be on the hearing distance. वो advocate कर सकता। He was there at Gurgaon protesting, and not only Gurgaon. अभी लास्ट मंथ हमने जुलाई में नोएडा में भी प्रोटेस्ट करा था, एंड आई वाज देयर एट नोएडा आल्सो, सेक्टर 42, एंड आई एम प्राउड ऑफ दीज मेनी थिंग्स कि जब भी ग्राउंड लेवल पर प्रोटेस्ट आती है आई एम ऑलवेज देयर। मैं 29 जनवरी को भी था जब ऑल इंडिया कॉल आई थी सबमिट करने को वो लेटर, जिसकी वजह से GSTR 3B में स्लैब बने। GSTR 3B में स्लैब बन गए हैं। 26 जनवरी को फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली में, उसकी वजह से 144 लगा हुआ था 29 जनवरी को, पर कॉल ऑल इंडिया की थी, बहुत लोगों ने आना था, नहीं आए, तो मैं अपने कुछ 2-3 दोस्तों के साथ जाकर सबमिट कर कर आया था वो। और उस दिन भी हम कमिश्नर लीगल से मिले थे, नॉट द प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर लीगल से मिले थे और पेपर जमा कर गए। आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ दीज थिंग्स कि अगर आपको ग्राउंड लेवल पर कभी प्रोटेस्ट है तो आप मुझे नॉर्मली पाएंगे वहां पर, ग्राउंड पर मैं जरूर मिलूंगा। बाकी वर्चुअली तो मैं दुनिया से मिलता हूँ, लेकिन जब भी ग्राउंड पर जरूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा खड़ा मिलूंगा आपको ग्राउंड पर, सबके साथ। एनीवेज, सो सम्मान देखो, प्रिवेंटिव एंटीवेशन समझ में आ गई। अगर आप अपने क्लाइंट को ये माइंड गेम्स के लिए ट्रेन कर देते हो, अगर आपने ट्रेन कर दिया अपने क्लाइंट्स को, तो फिर ये दिक्कतें नहीं आएंगी। बात समझ गए आप? डू यू अंडरस्टैंड कि ये दिक्कतें नहीं आएंगी? बट लेट्स कम टू CNDG। CNDG पैरा में अब चेंज हो गया है। पहले क्या था, CNDG पैरा में वो उनको अगर डिपार्टमेंट एग्री नहीं करता था तो वो इशू करता था नोटिस, नहीं करता था IDT में। बट GST में इवन इफ दे डोंट एग्री with the CNDG पैरा, they will issue you a notice. क्रॉस एम्पावरमेंट इंटेलिजेंस बेस्ड नोटिस के लिए तो स्टेट भी नोटिस दे सकता है, सेंटर भी नोटिस दे सकता है, तो वो आर एम्पावर्ड। बट इन रूटीन मैटर्स ऑल्सो इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, टेक माई वर्ड्स टुडे, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि नॉर्मल केसेस में भी नोटिस आएंगे दोनों साइड से ऑन द सेम इशू। और कोर्ट भी इसमें कोई बहुत रिलीफ आपको मिलने वाली नहीं है। कोर्ट विल नॉट गोइंग, कोर्ट इज नॉट गोइंग टू गिव यू सो मच। देन देर इज ए डिमांड, sorry, monetary limit for issuing you a notice. Monetary limits. Now, you all know this monetary limit, they may vary state-wise. But let me give you one more example. Karnataka mein, let's take an example of Karnataka. See, ACDC is empowered to issue demand notice for 20 lakh to 2 crore. Okay? But Karnataka, they have a specific condition for a state officer that if they want to issue a notice of more than 50 lakh of demand, they need approval from Joint Commissioner.
or above officer. So state-wise approving, so it notice issuing authority may also valid vary from state to state, amount also vary state to state, and pre-approval conditions might also vary state to state. So you have to be careful. You have to cross-check from your state. Okay. Now timelines for 73, 74. ये चेंज हो गई है दोबारा. ये पुराना वाला चार्ट है. द न्यू चार्ट इज दिस. पहले क्या हुआ था? 30th June was the last day to issue notice and for servicing of notice 73, and 30th September was the last date for servicing of order in case of 73 for 17, 18. But now they have changed this, and this notification issued on 31st March has changed the dynamics. Now show cause notice could be issued, or sorry, could be served to you by 30th of September for 17, 18. An order has to be once a notice has been served, the order should be served to you by 30th December 2023. Trust me, friends, if I have some experience in GST, then it is my gut feeling कि ये 30 सितंबर की डेडलाइन बढ़ के रहेगी. This will be extended. ये मेरी gut feeling है. क्यों है, किस लिए है, कुछ नहीं पता. पर जिस दिन ये डेडलाइन आई थी, मेरे दिल से ये आवाज निकल रही है उस दिन से कि ये डेट फिर बढ़ेगी और एटलीस्ट दिसंबर तक तो जाएगी जाएगी. एंड ऑर्डर हैज टू बी सर्व. तो इसीलिए अगर ये डेडलाइन नहीं बढ़ी तो बल्क में नोटिस आएंगे, और अगर बल्क में नोटिस नहीं आए तो उन्हें डेडलाइन बढ़ानी है. इट्स फॉर श्योर. 73 की डेडलाइन तो 2 बार बढ़ा दी. विल दे एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर 74 ऑल्सो? यस, एब्सोल्युटली राइट. If they have extended timelines for 73, they have to extend timelines for 74. It doesn't make sense कि 73 की timeline बढ़ गई, 74 की नहीं बढ़ रही. So then what will happen? Department will issue all notices in 74. Now, if 74 notice is issued in 74 and it is proved that the time the notice should have been issued in 73, notice should have been issued in 73, then order can be passed or served as per the timelines of 73. And because the timelines of 73 would have been violated, then even if department proves anything against you, they cannot pass an order and serve an order against you. Complicated? समझ में आ गया, or do you want me to repeat? Do you want me to repeat? देखो. See, a notice can be issued in 73 or 74. Let's presume 73 की डेडलाइन खत्म हो गई. Now the notice will be issued in 74. Now, first thing you should try to prove that notice should have been issued in 73, not 74. Now, if you prove this, कि notice should have been issued in 73, तो ये procedural error माना जाएगा. 74 या 73. So they have to pass an order in 73. Now, 73, now the order has to be served. Notice issued in 74, you proved it should be in 73. Now the order will be passed in 73, and it has to be served with the timeline of 73. Now, if the timeline for servicing of order of 73 is over, then this order cannot be served. So void ab initio. Okay. Now, see, very good question, that should we prove it through filing of writ?
Writs are dangerous. Writs are dangerous. Try to be in the regime of GST, appellate mechanism. See, High Court तो आप बाद में भी जा सकते हैं. Don't try to jump to High Court. आप मैकेनिज्म में रहिए. सबसे पहले मैं आपसे क्या कह रहा हूं? Who is levying allegation? Who is levying allegation? Department. Who has to prove that these allegations are right? Before proving your innocence, you have to question the premise of the notice itself. This is the way you have to change your style of answering to notices. ये आपको तरीका बदलना पड़ेगा. Department has to prove that they have issued notice, they have valid ground for 70. See, एक और बात कहता हूं. हालांकि यू माइट एग्री और यू माइट डिसएग्री. हल्की बात कहता हूं. See, whenever a notice is issued by income tax department, or whenever there is a search by income tax department, what they try to find in your premise or everything, what are the undisclosed transactions? Undisclosed transaction ढूंढते हैं इनकम टैक्स वाले. Vis-a-vis, GST department emphasize on tax and dispute the taxes or classification on disclosed transactions. Am I right or wrong? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमेशा अनडिस्क्लोज ट्रांजेक्शन की बात करता है. जीएसटी डिपार्टमेंट हमेशा डिस्क्लोज ट्रांजेक्शन की बात करता है. एम आई राइट और रॉन्ग? नाउ डू टेल मी, फॉर coming to 74, you should have hidden something. You should have not provided detail which was required you to submit. Can this be a possibility when you have followed everything, you have provided all details? Can they say that this is the way you have not provided details? Can there be case of 74 for disclosed transactions? Can there be 74 for disclosed transactions? For all the transactions which you have recorded properly and you have submitted all details properly, there cannot be 74. 74 can only be where you have hidden something or you have submitted incorrect detail intentionally. The word is used that you have an intention to evade tax. Now, if there is an interpretation issue, let's say it is about the classification, can this be considered to be evasion of tax, intentionally evasion of tax? The answer is no. So 74 cannot be there. So whenever you are subjected to notice to 74, the first thing you should challenge is that the premise of this notice should be 73, not 74. This is the way you have to start arguing. See, let me tell you, एक बड़ी अच्छी phrase है. Same case, same facts of the case, same case, two different lawyers argue. एक केस जीत जाता है, एक केस हार जाता है. ऐसा होता है नहीं होता? Does it happens or not? On same facts, same ground, same case, one wins, one lose. Practically possible और बहुत होता है. क्यों होता है? Is the way the lawyer has argued. The difference is the arguing.
The argument should be differently drafted. You should draft your, you should devote all your focus, you should devote all your energy in drafting your replies properly. Okay? Where you see, अब हल्के में नहीं ले सकते. See, Rahul ji, whatever has happened, you should be happy. Next time, try to avoid yourself presenting on behalf of the company, corporate. Let them face the music. You should not go there. So Sandesh ji is saying drafting is an art, and we are commerce students. Opportunity of being heard should be provided. लॉ में लिखा है, विदाउट अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आप ऑर्डर पास नहीं कर सकते. Subject to if I deny for opportunity. The order should be speaking order, and one penalty for one default. There cannot be multiple penalties. No penalty for retrospective, and penalty not imposable when it is of statutory interpretation. Interpretation के रूल पर issues पर penalty नहीं लग सकती. You have to remember this forever in your lifetime. That if the demand is because of interpretation, तो tax plus interest तो आ सकता है, penalty नहीं आ सकती. Then you know now it's mandatory. Notice, see, we have a very good case of Vrindavan Beverages, Supreme Court. Vrindavan Beverages say that the show cause notice defines the four corners and the order should be within that four corners. इसको bypass नहीं कर सकते. The order cannot bypass what the show cause notice is. Simple. Limitations, see, we all know. Let's run fast. ये आपको PPT मिली हुई है. You can read all the judgments. Now, opportunity of being heard. Whenever department has to pass any order which is against you, they have to give you opportunity of being heard. बिना उसके वो जा नहीं सकते. Adjournment maximum 3 times each party. In appeal also. But I disagree with this. 3 times. Law में लिख दिया, मानना नहीं है. If there is genuine case, then you can try and get adjournment on 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. N number of adjournment can be given. But you should have a genuine ground. और अभी आज मेरे पास ऐसा कोई केस लॉ नहीं है which support this judgment, which support my view. लेकिन एक दिन आएगा, ऐसा भी कोई जजमेंट आएगा जहां पर ये भी आएगा कि साहब आप 3 से ज्यादा एडजर्नमेंट भी ले सकते हैं जब आपका केस जेन्युइन है. ऐसा कहीं नहीं लिखा लॉ में कि 3 के बाद नहीं दे सकते. और अगर ऐसा लिख भी देते हैं तो भी substance over form, statutory right cannot be curtailed by procedural defect. Whatever amount is given in show cause notice, order cannot be passed for more than that. Interest is payable whether they give in show cause notice or not. Audit के केस में officer passing an order and officer signing the report must be 2 different officers. If order is not passed, show cause notice is not served within time limit, then they cannot extend it further. They cannot serve a notice. Whatever time period is stayed by the court or appellate tribunal, that would be excluded. And direct recovery proceedings तो अब खत्म हो चुकी. They have to issue notice, DRC 01B.
एक्सटेंडेड पीरियड 74 तभी लगेगा जब कोई सप्रेशन है। इंटेंशन टू इवेट टैक्स है तभी 74 आएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो 74 नहीं लग सकता। इन केस ऑफ बोनाफाइड बिलीफ, आपकी बोनाफाइड बिलीफ थी, क्लासिफिकेशन ऐसी थी, आपने कहा जी 12% लगे। डिपार्टमेंट ने, उस दिन कंफ्यूजन था, बाद में डिपार्टमेंट, किसी ऑर्डर आता है किसी के केस में, हाई कोर्ट का ऑर्डर कि क्लासिफिकेशन 18% में होना, तो डिपार्टमेंट 73 कर सकता है, 74 नहीं कर सकता, बिकॉज देयर वॉज अ बोनाफाइड बिलीफ, यू बिलीव, एंड लेटर ऑन दिस वॉज क्लेरिफाइड बाई अ कोर्ट। पर्सनल हियरिंग ऑलवेज नीडेड, वेदर, एक्सेप्ट, राजस्थान का एक केस है, what happened in that case, and you should also remember this case forever. Whenever you reply to any notice online, तो उसमें ना, डू यू वांट पर्सनल हियरिंग, यस नो का ऑप्शन होता है, तो बाय डिफॉल्ट इट पिक्स नो, विद विज बाय डिफॉल्ट इट शुड पिक यस, वो नो पिक करता है। और ऐसे ही किसी ने रिप्लाई कर दिया, डिटेल रिप्लाई था, एंड व्हेन द ऑर्डर वाज पास, इट वाज पास अगेंस्ट दिस पर्सन, दे वेंट टू राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट में डिपार्टमेंट ने कहा दैट सर, इन देयर रिप्लाई दे हैव पिक्ड द ऑप्शन नो, पर्सनल हियरिंग नीडेड यस और नो। बोले बिकॉज दे हैव पिक्ड नो, वी डिडंट प्रोवाइडेड पर्सनल हियरिंग। राजस्थान हाई कोर्ट सेड यस, ओके। बट इन दिस केस किसी ने भी ये आर्ग्यू नहीं करा कि सर, आपके बाय डिफॉल्ट नो होता है, और अगर मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा तो वो यस में चला जाएगा, सो इट इज माई मिस्टेक। सो सॉरी, इट इज नॉट माई मिस्टेक, इट इज द इश्यूज विद द सॉफ्टवेयर और द जीएसटी पोर्टल कि भैया वहां पर वो नो ही पिक करता है, इट्स नॉट यस। ओके, तो ये आप ध्यान रखिए, वेन एवर यू फाइल ए रिप्लाई यू हैव टू पिक द ऑप्शन पर्सनल हियरिंग यस। लेटर्स आर नॉट नोटिस, कोई भी लेटर इश्यू कर दें, इट्स नॉट अ नोटिस। कई बार वो इश्यू कर देते हैं आपको लेटर की, सर ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, पे दिस टैक्सेस, पे दैट टैक्सेस, नो। verbal notice, verbal communication, no notice, no demand. If they don't issue your notice, no demand. ये हमेशा याद रखिए। और इसको बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि GSTR 1 GSTR 3B में अगर गैप है तो लॉ इस तरह का बना दिया कि भैया हम तो आपके बैंक से डेबिट कर लेंगे। बट इट इज एज लॉन्ग विजडम, नो नोटिस नो डिमांड, आप पैसे रिकवर ही नहीं कर सकते जब तक आप नोटिस नहीं देंगे। ऑफ कोर्स दे हैव चेंज इट फ्रॉम नोटिस टू प्री शो कॉस्ट कंसल्टेशन, बट अगेन कुछ तो आ रहा है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द नोटिस इज टू पुट टू द नॉलेज। सर, प्राइमरी पर्पस नोटिस का ये है कि उसको बताया जाए कि भाई हमें आपसे पैसा लेना है, या संबंध समझ लीजिए। संबंध का भी पर्पस ये है कि उस आदमी को कम्युनिकेट करना है कि भाई आपको बुला रहे हैं तो एज अ विटनेस बुला रहे हैं किसी और के केस में, या हम समझते हैं कि आपने ही गलती कर रखी। तो समवन रोड फ्यू मिनट्स बैक कि सर वो संबंध में पार्टी का नाम तो बताते ही नहीं, समबडी रोड फॉरगॉट द नेम। और ये हकीकत में ऐसा ही होता है। सर, someone is saying that kindly share the PPT to the participant। आप बताइए, मैंने आपको पीपीटी के लिंक दोपहर भेज दिए नहीं भेज दी? जस्ट टेल मी। पीपीटी और जो फाइल्स आपको मिलनी थी मैंने दोपहर में भेज दिए सारे लिंक, यस और नो? Everyone has received PPT link? See the message in which we have sent for Zoom meeting, उसी में पीपीटी के लिंक थे, लेटर्स के भी लिंक थे, सब मिल गया आपको दोपहर में। बात का चक्कर ही नहीं रखना सर। No notice, no demand. If show cause notice is proved that it has a defect or partly defective, then these defect cannot be rectified by later action, तो आप रिकवरी नहीं कर सकते। सो एनी ऑर्डर पास बियॉन्ड द शो कॉज नोटिस, देखिए मैंने बताया ना, वृंदावन बिवरेजेस, ये जजमेंट आप पढ़ लीजिए।
इट्स अ वेरी गुड जजमेंट, और इसमें बहुत सारी चीजें डिफाइंड है। वृंदावन बेवरेजेस, सुप्रीम कोर्ट, नोट कर लीजिए अगर नहीं कर रहे कहीं कहीं पर प्लीज। वृंदावन बेवरेजेस सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर डिफाइंड है क्या क्या होना चाहिए। डिपार्टमेंट कैन नॉट इशू नोटिस अगेन टेकिंग अ कॉन्ट्ररी स्टैंड। जो एक बार ले लिया वो ले लिया। आज अगर वो क्लासीफाई है एक ट्रांजेक्शन को, दे वांट टू क्लासीफाई एज ए, टुमारो दे कैन नॉट गो एंड से नो वी वांट टू क्लासीफाई इट एज बी, दैट्स नॉट पॉसिबल। बाकी सारे केसेस आपके पास हैं, आप पढ़ लेना, मैं काम की चीजों पे जंप करता हूँ। सब्सिक्वेंट नोटिस, so we all know that a revised return steps in the shoes of original return. GST में revised return का concept नहीं, but you can amend the return. So demand can only come on the basis of revised return or the amended return if those are filed within time limits. So many have issues with service of notice. So notice can be served direct delivery or messenger through courier, hard copy, by registered post, by communicating it to the email, by common portal, पब्लिशिंग इन न्यूज़पेपर सेकंड लास्ट ऑप्शन है, और अफिक्सिंग वो लास्ट ऑप्शन है। ये दोनों पहले एक्सरसाइज नहीं कर सकते। नाउ द इशू इज, मेनी पीपल हैव इश्यूज दैट notice has been sent to you by hard copy, not on email, and such notice is not available on common portal. Now the issue is, if the notice is not available on the common portal, if the notice is not available on the common portal and it has been sent to you by only hard copy, should you participate or not? Or is it a valid service of notice or not? Sir, with all due respect to everyone, कभी भी ना अपने क्लाइंट को खुला नहीं छोड़ना, वट एवर पोजिशन यू टेक। अगर आपको लगता है दिस इज नॉट वैलिड सर्विस ऑफ नोटिस, यू चैलेंज दिस सर्विस ऑफ नोटिस थ्रू रिट इन हाई कोर्ट। या तो आप सर्विस ऑफ नोटिस को चैलेंज करें एंड अप्रोच हाई कोर्ट थ्रू रिट, या आप पार्टिसिपेट करें थ्रू मैनुअल रिप्लाईज। यू हैव ओनली टू ऑप्शंस। थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता दैट यू डोंट पार्टिसिपेट, कंसीडरिंग इट invalid service of notice but not challenging. You get my point what I am trying to explain? आपको हार्ड कॉपी से नोटिस आया which is not uploaded on the common portal, so either you challenge service of notice before high court, or you participate in the proceedings and reply manually. You don't have third option. If you do not challenge the service of notice and you do not participate, then that will go against you, and then a demand order will be issued, and then can't we challenge in the offline reply? My answer would be, do not try to play with fire. This will hurt the ego of the officer. जिसने नोटिस इशू करा आप उसी को जाकर रिप्लाई में ये दे रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास पावर नहीं है ऐसा नोटिस देने। इट विल हर्ट। डू नॉट हर्ट द ईगो ऑफ ऑफिसर। ईदर अप्रोच कोर्ट, और कोर्ट में आप तो होंगे नहीं, आप तो एडवोकेट होंगे नहीं, यू आर नॉट ऑन द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। आप हमेशा वार्ड वाले ऑफिसर से संबंध बना सकते हैं, कह सकते हैं सर हमारी सुनी नहीं क्लाइंट ने, या हमें तो बताया ही नहीं कि नोटिस आया, सीधा कोर्ट चला गया।
Okay. So either participate or challenge in court. No third option, in my opinion. I reserve the right to be wrong. Sir, whenever you approach court, you will not be appearing in the court. So then you can always say, sir, client ने मुझसे discuss ही नहीं करा, सीधा court चला गया. Sir, it isn't, it is 23rd year of 21st century. अगर हम हिंदू संस्कृति में काल की बात भी करें ना, तो ये कलयुग है. सतयुग में राजा हरिश्चंद्र थे, जो सच बोलते थे. वी आर इन कलयुग, 23rd year of 21st century. यहाँ सच नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना जरूरी नहीं. ओके. एंटीवेजन वाले क्या एक सप्लायर ए की डिटेल सम्मान में देकर दूसरे सप्लायर बी के फेक होने का प्रेशर बना सकते हैं? एनीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एंड these kind of things happens frequently in anti-evasion cases and DGTI. So it happens, it's a regular feature. प्रेशर जितना जिससे बनाया जा सकता है उतना बना लेता है. लीगल इलीगल we can challenge in court. Only court can decide what was legal, what was illegal. पर अगर वहां पर बैठा हुआ आदमी साइकोलॉजिकल गेम में आ गया, फंस गया, तो वो रिवर्सल करके हटेगा. एंड इन मोस्ट ऑफ द टाइम डीजीजीआई एंड एंटीवेजन आफ्टर सम्मनिंग क्लाइंट, और क्लाइंट अगर वहां पहुंच जाता है, दे एंड अप रिवर्सल. ओके. सो मैनर ऑफ सर्विस हो गया. एवरी नॉन पेमेंट इज नॉट सप्रेशन, ये हमेशा याद रखना लाइन. Every non-payment is not suppression. You have to challenge the premise of 74 that yes, we agree, we have not submitted, we have not paid taxes, but that is not suppression of X. 74 is not applicable on us. Whenever officer rejects your reply and passes an order contrary to the judgments of various high courts, you should challenge this in first appeal, saying that non-application of mine, that this officer has not accepted my reply, he has not read my reply, or the order was passed in hurry. Then it's mandatory. Leave this. Okay. आप आराम से पढ़ लेना what I have done. See, the PPT is designed in this way कि जो कॉमन लाइन है वो मैंने ऊपर डाल रखी है. दैट डज नॉट मीन कि एग्जैक्टली यही वर्ड्स मिलेंगे आपको जजमेंट. आई हैव समराइज दीज जजमेंट कि एक नॉर्मल लाइन डाल दी, एंड देन आई हैव रिटन केस लॉस, कि जब भी आप कंटेस्ट करें तो आपको आपकी स्टेट का जजमेंट मिल जाए. आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट इन डिजाइनिंग दिस पीपीटी. यू विल गेट ऑलमोस्ट 300 judgments here. Okay. See, this is the case. Notice must contain all essential Brindavan beverages, the landmark judgment. Otherwise, you have 2 more judgments. Show cause notice cannot be based on assumption and presumption. There should be reasons to believe for issuing this show cause notices. Okay. So what is the structure? See this, I'm saying this circular. You should download this circular. 10th March 2017 का सर्कुलर है. ये मास्टर सर्कुलर है, अपने पास डाउनलोड करके रखिए. देने को मैं भी दे सकता था, एक लिंक बढ़ाना था, पर मैं चाहता हूं आप खुद करें. खुद करेंगे तो आपको याद भी रहेगा. खुद डाउनलोड करेंगे ना तो एक बार खोलेंगे भी उस सर्कुलर को. अदरवाइज मैं दे दूंगा ना तो ये सारी पीपीटी ना आप खोलने भी नहीं वाले जल्दी से. आपको टाइम नहीं मिलेगा. आप कहोगे ठीक है यार, 300 या 200 स्लाइड्स की पीपीटी है, कभी पढ़ लेंगे. वो कभी कभी नहीं आएगा. सो अ शो कॉज नोटिस, देखो शो कॉज नोटिस कैसा दिखना चाहिए.
It should have introduction to the case. किसको दे रहे हैं? द लीगल फ्रेमवर्क, कौन से सेक्शन में आ रहा है, कौन से रूल में आ रहा है. देन फैक्चुअल स्टेटमेंट एंड एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, कि भैया क्यों आ रहा है, आपने क्या गलती करी, क्यों दे रहा हूं मैं शो कॉज नोटिस. देन डिस्कशंस and the time limits. The show cause notice should also tell you that this is within their time limits. कि भाई मैं 73 में आ रहा हूँ and this time limit, I have a time limit. मैं 74 में आ रहा हूँ, I have a time limit to issue this notice. If they do not, then again this notice, if they go beyond time limit, then you can challenge this and it is void ab initio. Then as far as possible they should calculate the duty and other amounts due. Interest पर माना जा सकता है, interest they can leave it because interest will vary with date also. Then what are the charges? What charges they are levying against you? अगर वो charges नहीं बता रहे तो ये गलत है. They have to come on charges. They cannot see. In registration cases, many of the show cause notices are issued saying this, that you have obtained GST registration with willful statement, mis documents or something like that. Such notices are considered to be cryptic in nature, vague in nature, and such notices are void ab initio. जहां भी वो वन लाइनर या लॉ का कॉपी पेस्ट करके आपको शो कॉज नोटिस नहीं दे सकते, उन्हें एग्जैक्टली बताना होगा व्हाट इज योर इशू, व्हाई दिस नोटिस हैज कम. कि अगर आपने कौन सा कागज गलत दिया है जो उन्हें लग रहा है कि गलत है, दैट इज व्हाई दे आर प्रपोजिंग टू कैंसिल योर जीएसटी रजिस्ट्रेशन. अ क्रिप्टिव नोटिस इज द वन जहां लॉ का पॉइंट कॉपी करके डाल दिया दैट योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड ऑन विलफुल मिसस्टेटमेंट फ्रॉड. On basis of such notices, your GST registration can never be cancelled. Or in the order itself, they have copied this line. No, they have to specify कि कौन सा document गलत दिया है. Okay. Then who is issuing this notice? तो जिस आदमी का नाम होगा, ऑफिसर होगा, he has to disclose his name, he has to disclose his designation, because if designation is not there, how I will know that this is my this officer as my territorial jurisdiction? Okay, and with the designation, I will also check whether this notice is within his monetary power to issue this notice or not. So ये आपको देखकर चलना है जब भी नोटिस आए. जब भी ऐसे नोटिस आए, you have to challenge this. In all these cases, I would say challenge such cryptic notice in high courts. और बोर्ड में बिगाड़नी नहीं है तो आप उससे कहिए कि डिटेल नोटिस दे दीजिए. यू कैन सबमिट अ रिप्लाई दैट प्लीज प्रोवाइड अस a detailed notice with allegations specified. Then only we can reply. If you do not tell me allegations, then how can I reply? मैंने कल परसों लिंक्डइन पर भी एक, कल नहीं परसों मैंने लिंक्डइन पर एक लिखा भी है, इस पर एक पोस्ट छोटी सी, और ट्विटर पर भी कॉपी पेस्ट की थी. आप वो पढ़ सकते हैं. दैट वाइफ सेज टेल मी समथिंग व्हिच यू हैव नॉट टोल्ड मी इन लास्ट 6 years. हस्बैंड कहता है व्हाट आई हैव टू टेल. वाइफ सेज नो, यू हैव टू टेल मी व्हाट यू हैव नॉट डिस्क्लोज टू मी इन लास्ट 6 years. हस्बैंड सेज बट आई हैव नॉट हिडन एनीथिंग. नो, व्हाट इफ यू आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम मी इन पास्ट 6 years? Husband says, I am not hiding. I am surprised you are asking me these questions. Wife says, if you miss something in last 6 years and I find it out, then फिर तो देख लो भैया, अगर 6 साल में तुमने मुझसे कुछ छुपाया है. हस्बैंड कह रहा है कि भाई मुझे बता दो तो मैंने क्या छुपाया. बोले कुछ नहीं, पर अगर मुझे मिल गया तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम. दिस इज द पोजीशन ऑफ जीएसटी नोटिसेस. Notices are issued vague, seeking documents for last 5 years, 6 years. अगर आज नोटिस आता है तो इकट्ठे 5-6 साल का आ जाता
और वो बड़ा वेग नोटिस होता है, सर सबमिट डिटेल्स ऑफ पार्टीज विच फ्रॉम विच यू आर डीलिंग, सबमिट डिटेल्स, सबमिट बैंक स्टेटमेंट, सबमिट दिस, सबमिट दैट। वो नोटिस डिमांड के ना रहकर या स्कूटनी के ना रहकर इन्वेस्टिगेशन टाइप हो गए, बट देन यू हैव टू कंटेस्ट। टाइम लिमिट हमने गलत डिस्कस कर ली, वी हैव डिस्कस extended period only when fraud, willful misstatement, suppression of facts. Okay. Fraud versus negligence. See, a fraud is a positive act to evade tax. Negligence के आपने ध्यान नहीं दिया. So 74 can only come with a positive action by you from something. Okay. So किन केसेस में विलफुल स्टेटमेंट होगी, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स होगा, ये आप जब आपका जब केस होगा तो यू कैन टेक यूज ऑफ दिस. ओके. Merely claiming wrong classification is not suppression of facts. अब इन नोटिस के रिप्लाई ड्राफ्ट करना क्या है, हाउ टू रीड शो कॉस्ट नोटिस. आपको सबसे पहले देखना है व्हाट इज द डेट ऑफ इशू ऑफ शो कॉस्ट नोटिस. सबसे पहले तो नोटिस को पढ़ना कैसे, मुझे भी नहीं आता है, मैं सिर्फ वो बताऊंगा जो मैं करता हूँ. आपको अच्छा लगे तो फॉलो करो, नहीं अच्छा लगे तो. सबसे पहले जब मुझे एक शो कॉस्ट नोटिस आता है या कोई भी नोटिस आता है, आई यूजुअली गिव माई फोन आउटसाइड, बाहर दे देता हूँ और लैपटॉप बंद कर देता हूँ. आई टेक अ प्रिंट आउट, और बहुत सारे कलर के मैं हाइलाइटर रखता हूँ, बहुत सारे मतलब जिस तरह मैं पढ़ता हूँ बताता हूँ. नोटिस का प्रिंट आउट मैं हमेशा लेता हूँ, ऑनलाइन नहीं पढ़ता. आई टेक अ प्रिंट, पहली बार पूरा नोटिस पढ़ूँ, पूरा. और लगभग 20 से 25 मिनट मुझे लगती है नोटिस पढ़ने में, 3-4 पेज के नोटिस पढ़ने में, पूरा पढ़ूंगा. उसके बाद मैं समझता हूँ कहानी क्या है. दूसरी बार जब उस नोटिस को पढ़ना शुरू करता हूँ, देन आई स्टार्ट मार्किंग. लेट्स से दे हैव यूज्ड द वर्ड एजेंट, तो मैं उसे मार्क करूंगा, डायरेक्ट मेरे पास रखा रहता है. आई विल मार्क दिस एजेंट इज डिफाइंड इन दिस सेक्शन टू दिस. फिर मैं पूरा नोटिस मैंने पढ़ लिया, तो जो एजेंट वर्ड है फिर मैं जाकर उसकी डेफिनेशन वहां से पढ़ूंगा. मैंने ये डेफिनेशन चाहे कल रात ही पढ़ी हो, फिर भी मैं दोबारा उसको पढ़ूंगा कि एजेंट की डेफिनेशन क्या है, whether this person is covered in agent definition or not. उसके बाद ऐसे ही जितने वर्ड एक्ट में डिफाइंड है उन सबको मैं हाईलाइट करता चलूंगा और उसको पढ़ता चलूंगा. अब वहां पर कहाँ पर मुझे ग्रीन हाइलाइटर यूज करना है, ऑरेंज यूज करना है, ब्लू, बहुत सारे हाइलाइटर से मैं यूज करता हूँ. कलरफुल हो जाता है जी, बिल्कुल रेनबो बन जाता है वो नोटिस. थर्ड टाइम फिर मैं इन टेक्निकल वर्ड के साथ पूरा वो पढ़ता हूँ, एंड देन आई थर्ड टाइम पढ़ते वक्त आई हैव अ फॉर्मेट. उसमें मैं अलग से करता हूं कि जो ये नोटिस दिया गया है इसमें ये फैक्ट लिखा है, इसमें ये उसका ओपिनियन है, और क्या ये एलिगेशंस लगा रहा है नहीं लगा रहा. नाउ इफ अ नोटिस इज इशूड, नोटिस इज इशूड टू मैसर्स XYZ. XYZ, यू आर अ ट्रेडर इन स्टील. नाउ अब मान लीजिए फैक्ट है दैट आई एम XYZ. दिस इज अ फैक्ट. ओके. नोटिस में लिखा है यू आर अ ट्रेडर इन स्टील. नाउ इट इज अ फैक्ट, बट I am a manufacturer in steel. I am not a trader in steel. So I will write next point. It's a fact, but I have to counter it. हालांकि इसके काउंटर करने से कुछ बहुत चीजें नहीं बदल रही, बट इट हेल्प्स मी इन डेवलपिंग कि नहीं ये भी गलत है नोटिस में. और सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कट कॉपी पे सिर्फ हम लोग नहीं करते, डिपार्टमेंट भी करता है. एंड मोर प्रॉब्लम्स यू फाइंड इन द नोटिस, you have better chance to win the case. Allegate.
allegate. Now I have principal place of business. I have three registration in same city. One is disclosed at principal place of business. दो मेरी branches हैं. Additional place of business. Now उन्होंने गलत लिख दिया that your principal place of business is, instead of A, they have said principal place of business is B. This is the wrong fact. I will counter it. Okay. Normally, because today the notices are issued in show cause notice is issued in uh, email format or electronically. So date of issue, date of receipt of notice is both are same. But whenever there is a DIN, you should cross check DIN. DIN को जाकर verify कीजिए कि वो DIN जिस date of issue of show cause notice दिखा रहा है उससे पहले का है या उस date का है या नहीं. We have found in certain cases कि वो DIN जो date का notice दिखा रहे हैं उसके बाद का है, and we have got the notices quashed on basis of this. So कहीं लिखा नहीं है, but you have to cross check DIN also. Okay. Then list of relied upon document. On what premise they have issued this notice. You have to cross check all the relied upon document. अगर notice किसी और language में है, then you should get it translated. Google Translate मत करना. Get a legal translator. Then who has issued the notice, whether it is within his power, monetary, territorial jurisdiction, both you have to. And time limit, of course, we are going to check. Now, why this demand has come? Is it scrutiny of return, audit, anti-evasion, TGGI action, CNAG para? पहले समझो कि डिमांड आई क्यों. What are the facts of the cases? Allegations. क्या allegations लगा रहा है डिपार्टमेंट? What are the nature of his allegations? बेसिस क्या है? वो कह रहा है 2A 3B मिसमैच है. ये तो एलिगेशन हो गई, मिसमैच हो गई. पर 2A कौन सी डेट का ले रहा है जी वो? 2A इज डायनामिक, यस और नो? 2A इज डायनामिक, यस और नो? आज मैं 2A कुछ लेता हूं और 10 दिन बाद 2A कुछ और निकालता हूं. देयर कुड बी डिफरेंस और नॉट? यस. What is the evidence department is having why they are charging me? क्या है? Is this notice issued because of interpretation of statutory provisions? तो 74 में आना ही नहीं है केस, 73 आएगा. Are they relying on some judgment or AA, AAA ruling? Or this notice is based on third party statement. भाई किसी को DGGI ने पकड़ लिया, उसने स्टेटमेंट दी है कि भैया मैं तो सारी बोगस डीलिंग करता था, मैं तो सिर्फ बिल इशू करता था. What are discrepancies in my records कि ये नोटिस आया है? For example, I have not filed my return, or they have come with my invoice versus e-way bill. For every e-way bill, am I supposed to generate invoice? The answer is no. But they have captured this situation. So is there any discrepancies in my record? The answer is no. But in this case, a reconciliation statement has to be given that I have generated e-way bill for A, B, C for 1 to 100, but I have generated invoice only for 1 to 10. For 90 cases, I don't require to generate invoice because that was movement from interbranch, or there was a movement of lots or something like that. Or this I have sent to my job worker. Each demand comes from CBIC circular, advisory or something like that. Recurring demand. हर साल एक ही नोटिस आ रहा है, and we are taking classification as A, department is classifying as B. IDT era से केस चल रहा है, मैटर इज पेंडिंग बिफोर ट्रिब्यूनल, सॉरी सिस्टेट और हाई कोर्ट. कुछ नहीं हो सकता. You have to continue with it. Then how they have come for demand? Finally, पैसा कैसे मांग रहे हैं वो? Is it a classification issue? Is it a valuation issue? Or they are saying that they are going to deny me exemption notification because I have not followed
the steps. See, because exemption notification के लिए क्या होता है, you have to strictly interpret and you have to follow everything. Is there an issue with rate of tax or demand is cum tax? Then what are the statutory provisions invoked in the SCN? What are the action proposed? Action तीन तरह के होते हैं. Either they increase your output liability or they reduce your ITC. ये दो एक्शन में. और तीसरा है दे प्रपोज टू सस्पेंड और कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन. ये तीन बेसिक प्रेमाइस होते हैं. व्हाट आर द एक्शन प्रपोज. अगर शो कॉज नोटिस में एक्शन नहीं बताया तो कोई एक्शन ऑफिसर नहीं ले सकता. दे हैव टू टेल in the notice itself that if you do not reply or your reply is not satisfactory, then what action the officer will take. अगर शो कॉज नोटिस में यही नहीं लिखा that what are the action they are going to take because of your non reply or non satisfactory reply, then you can't take any action. Time limit of, we know that they usually they give 30 days limit, but if they give you lesser limit, then also you should cooperate with the department. You should try to reply. भाई बहुत छोटी लिमिट दे दी, 3 दिन की, 2 दिन की, 1 दिन की, तो मैं मानता हूँ गलत है. 30 डेज की ना देकर से 28 डेज की दे दी, 21 डेज की दे दी, देन यू शुड कोऑपरेट विद द डिपार्टमेंट. हर समय लड़ने की बात नहीं करूंगा डिपार्टमेंट से. यू शुड सबमिट. लेट्स से 21 डेज में उन्होंने 10 डिटेल मांगी, यू हैव कवर्ड 9. 9 डिटेल देकर उनसे 1 वीक का, 10 दिन का टाइम मांग लो, दे विल सपोर्ट. देखो डिपार्टमेंट भी लड़ने नहीं बैठा आपसे. ओके. देन क्रॉस एग्जामिनेशन. क्रॉस एग्जामिनेशन योर वेस्टेड राइट. अगर कभी भी आपकी डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ ए स्टेटमेंट ऑफ अ थर्ड पार्टी कम्स, then you have the right to challenge it. You have the right to cross examine the person कि भैया उसने ऐसा बोला तो मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट दो. यू शुड ऑलवेज यूज दिस राइट whenever there is a demand on basis of statement of some other person. बात समझ में आ रही है. यू शुड ऑलवेज यूज द राइट टू क्रॉस एग्जामिन द अदर पर्सन. ठीक है. ये नोटिस के टाइप हैं, इशू हो जाते हैं. फैक्ट्स वर्सेस ओपिनियन ही समझ लीजिए. टैक्सपेयर इज ए कंपनी, फैक्ट. टैक्सपेयर इज रजिस्टर्ड, फैक्ट. टैक्सपेयर इज ए ट्रेडर, नो. टैक्सपेयर इज ए मैन्युफैक्चरर. नाउ टैक्सपेयर इज नॉट डिस्चार्ज द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी करेक्टली, दिस इज नॉट अ फैक्ट, दिस इज एन ओपिनियन. आप मानते हो कि ओपिनियन है, मैं थोड़ी मानूंगा. टैक्सपेयर हैज क्लेम्ड inadmissible ITC. This can never be a fact. It is department's opinion. Taxpayer has paid IGST instead of CGST as GST. So this is a question of place of supply, and it is interpretation of underlying fact. This is not a fact. आपको नोटिस में एक एक चीज को अलग करना पड़ेगा कि भैया ये फैक्ट है या ओपिनियन है. तब जाकर आप केस को डिफेंड कर पाओगे, तब जाकर आप रिप्लाई अच्छा सा बना पाओगे. मियरली एक बार में पढ़ लिया और रिप्लाई ड्राफ्ट पे जंप कर गए तो फिर रिप्लाई नहीं बनेगा. आपको अच्छे से नोटिस को पढ़ना है, फैक्ट्स और ओपिनियन को अलग करना है. फिर आप क्या कहेंगे कि बैकग्राउंड क्या है, असेसी का ब्रीफ क्या है, ब्रीफ देना है. आपको फैक्ट्स को रिप्लाई करना है कि भाई मान लीजिए उसने नोटिस दिया है कि आपने इस डेट को रिटर्न फाइल करी है, तो दिस इज अ फैक्ट, यू हैव टू रिपीट द फैक्ट. यस, किस डेट वाइज में इवेंट्स कैसे हुए हैं. So if anyone is following me on social media, anyone, जो भी लोग सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे होंगे उन्हें पता होगा मैं रोज सुबह नॉर्मली एक केस लॉ डालता हूँ. हफ्ते में 5 से 6 केस लॉ में डालता हूँ. और मेरा उसमें एक एम्फेसिस होता है कि मैं फैक्ट्स को टाइमलाइन के साथ प्रोड्यूस करूँ, जिससे कि एक हैबिट बन जाए आपकी भी समझने की, अंडरस्टैंडिंग की कि इस केस में हुआ क्या था. So you have to master facts. So if you are not following me on any social media, then I would request you to follow on social media. या जो लोग भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो उन्हें जब भी एक मैसेज मेरी टीम जब भी भेजती है तो भेजती होगी दिन में,
तो एक फैक्ट्स की जरूर डिटेल आ जाती है कि टाइमलाइंस के साथ कि कब, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स क्या है। तो आपको अपने केस में भी अपने रिप्लाईज में क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट समझानी है ऑफिसर को। दिस इज द वे यू हैव टू एक्सप्लेन इट। फिर रेलेवेंट फैक्ट्स लीडिंग टू दिस डिमांड प्लस एलिगेशंस क्या है, और एलिगेशन जो भी उन्होंने लगाए हैं वी हैव टू काउंटर इट विद द फैक्ट्स। नाउ हियर यू हैव टू चूज कि मैं अपना केस किस बेस पे लड़ना चाहता हूं, हाउ आई वांट टू विन दिस केस। ऑन द मेरिट ऑफ द केस आई वांट टू चैलेंज द लिमिटेशंस, टाइमलाइन गलत हो गई, और मॉनेटरी लिमिट्स गलत हो गई, और सर्विस ऑफ नोटिस सही नहीं था, और स्ट्रक्चर ऑफ द नोटिस इज वेग, क्रिप्टिक नोटिस है, और ऑफिसर की पावर में नहीं था इतने अमाउंट का नोटिस देना, या ऑफिसर की पावर में नहीं था ये नोटिस देना, डिमांड की कंपटीशन गलत है, और जो एक्शन वो प्रपोज कर रहे हैं वी डोंट एग्री विद द एक्शन। देख कि भैया मेरा कैंसिल करना चाह रहा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो आपकी पावर में नहीं है जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना। सी फर्स्ट रिप्लाई, होल केस बेस्ड ऑन योर फर्स्ट रिप्लाई। पहला रिप्लाई पर जितनी मेहनत करोगे आगे जाकर उतनी ही कम मेहनत करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने 4 कंटेंशन लगाई हैं तो उनको बोल्ड करो, और एक एक कंटेंशन का अलग अलग आंसर दो। इवन दिस इफ इट मींस दैट यू हैव टू रिपीट द फैक्ट्स, तो आप उतने फैक्ट्स को रिपीट करो। ऐसा मत कहो दैट एज स्टेटेड अबव, नहीं, आपको एक एक कंटेंशन के रिप्लाई में बार बार भी अगर स्टैट्यूटरी प्रोविजन सेक्शन को कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है तो प्लीज कॉपी पेस्ट इट। आप शर्म मत कीजिए पेपर्स बचाने की, that I should reply only in 10 pages. No. If it goes to 15 pages reply also, do not hesitate in copy pasting or repeating the facts or repeating the statutory provision. Do not hesitate. जब भी आप कोई जजमेंट कोट करें हेड नोट से ना पढ़े, और जब भी आप रिप्लाई दें तो उसमें ये जरूर मार्क कर दें कि आपका रिप्लाई जो जजमेंट को आप कोट कर रहे हैं वो कौन से पैरा से कॉपी कर रहे हैं। You should copy the para, you should mention the para number. If you are not mentioning para number and if you are merely copy pasting head note, that is totally incorrect. This we have done. So when you are appearing before adjudicating authority, ward officer के सामने भी जा रहे हैं, then first prepare a synopsis. आपको फैक्ट्स सिनॉप्सिस बना कर रखिए कि क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं, एंड वट एवर अपने पास बनाकर रखिए। इंडेक्स तो आपने बना दिया जब रिप्लाई सबमिट करा अगर बड़ा रिप्लाई है तो, बट सिनॉप्सिस अपने पास बनाकर रखिए, जब आप डिस्कस करें तो आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए, आपको बार बार रिप्लाई को खोलना ना पड़े। अदरवाइज भी अगर रिप्लाई में जब आप जाते हैं तो आप कलरफुल स्टिकर्स लगा दीजिए। देखिए वैसे भी हमारी लाइफ बहुत ब्लैक एंड व्हाइट है, मतलब हम लोग मोनोक्रोम में जी रहे हैं एक तरह से। तो जितना ज्यादा हो सके अपने शो कॉस्ट नोटिस अपने रिप्लाईज में कलरफुल टेप्स और वो लगा कर रखिए। अमंग पर्सनल मी, whenever you do a hearing, एक अपनी फाइल में राइट साइड में जैसे डिपार्टमेंट नोट शीट लगाते हैं ना, ऐसी आप भी बना कर रखिए किस डेट में क्या हियरिंग हुई थी, सो यू नो कि भैया किस डेट में क्या हुआ और हमने क्या किया। कई बार बहुत लोग डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस को, सर्विस ऑफ नोटिस को इशू बनाए थे। आई डोंट बी लाइक द वे, एंड एक एक पॉइंट को रिप्लाई करना है वो तो मैंने कर लिया। जब भी आप रिप्लाई दें ऑलवेज यूज 1 to X नंबर ऑफ पेज। देखो एक तरीका होता है माइक्रोसॉफ्ट में, जब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप ज्यादातर लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, तो जब आप उसमें पेज नंबरिंग पर जाते हैं तो पेज नंबरिंग 1 2 3 4 ले ली। कोशिश कीजिए, माई हम्बल सजेशन, कि आप 1 to X पेज नंबर का ऑप्शन चूज करें, सो दैट द ऑफिसर नोस दिस इज पेज नंबर 8 ऑफ टोटल 12 पेजेस रिप्लाई, सो दैट देर आर लेसर चांसेस कि वो पूरा ना पढ़े। अदरवाइज कई बार होता है कि पूरा रिप्लाई नहीं पढ़ते,
तो कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस हो जाती है। इसमें हम्बल सजेशन, जब भी आप जजमेंट दें, वैसे तो अगर देखो आपने कोट करी है किसी बड़ी लाइब्रेरी को या अच्छी मैगजीन को, तो फिर तो आपको जजमेंट देने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी ऐसे केस लॉ को रिलाय कर रहे हो जो बड़ी मैगजीन्स में कोटेड नहीं है, तब आपको उस जजमेंट की कॉपी देनी चाहिए। जैसा हम्बल सजेशन। फॉन्ट साइज, देखिए यू शुड बी लुक प्रोफेशनल। कैलिब्री, गैमरॉड, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, these should be the font size. Ideally it should be the font, sorry, the font was these. Font size should be ideally 12 to 14, and spacing should be between each line 1 to 1.5. और राइट साइड में हमेशा यू शुड लीव मोर मार्जिन। मान लीजिए आप 0.5 के मार्जिन पर काम कर रहे हैं, तो ऐसा मत कीजिए, 1-1.5 मार्जिन छोड़ दीजिए, जिससे कि जब ऑफिसर कुछ आपका रिप्लाई पढ़ रहा है और वो कुछ नोट करना चाहे तो उसके पास स्पेस होना चाहिए नोट करने के लिए। ओके, ऑफिसर की सहूलियत आपको देनी है। ऑलवेज प्लेस ऑन रिकॉर्ड योर ऑथराइजेशन और वकालतनामा, जरूरत पड़े तो बाद में दे दो, पर कोशिश करो कि रिप्लाई के साथ साथ सबमिट कर दो, सो दैट ऑफिसर को भी पता होता है कि ये इस सीए के यहाँ से आया, इस वकील के यहाँ से आया, एडवोकेट के यहाँ से आया है। और उनसे उनके टर्म्स भी होते हैं जो बोर्ड में जाते हैं, तो उन्हें पता है कि किससे बात करनी है या कैसे बात करनी है। उनको पता है इस वकील साहब से हमारे संबंध हैं, तो मान लीजिए कभी को कुछ गड़बड़ हो गई, मिस हो गई आपसे डेट, या क्लाइंट ने नहीं बताया किस डेट की हियरिंग थी, तो वो अदरवाइज नहीं जाती चीजें। या कई बार आप सिटी में नहीं है, एडजर्नमेंट मिलने में दिक्कत नहीं आती। अपना वकालतनामा और ऑथराइजेशन जरूर लगाइए। मेंटेन एड्रेस प्रोटोकॉल, लॉयर्स के साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, बट इट कम्स विद अदर्स, so you should always maintain a trust protocol. इनफैक्ट व्हेन यू गो विथ योर क्लाइंट, कई बार क्लाइंट भी साथ में चला जाता है, तो आपको क्लाइंट को भी बताकर चलना है दैट ही शुड ऑल्सो मेंटेन डेकोरम ऑफ द हियरिंग, ही शुड मेंटेन अ ड्रेस प्रोटोकॉल। ऐसा ना हो कि आप तो फॉर्मल ड्रेसअप्ड हैं और क्लाइंट टी शर्ट में चला गया या फैंसी गोवा पार्टी बीच वाली टी शर्ट में चला गया। नो, यू शुड आस्क योर क्लाइंट ऑल्सो टू वियर, टू ड्रेस अप प्रॉपरली। या तो वो हियरिंग पे ना जाए, और अगर जाना है देन ही शुड ड्रेस प्रॉपरली। और इसमें अपना वीटो पावर यूज कीजिए, आप उसे कहकर चलिए पहले ही कि भाई ढंग से रेडी होकर आना। आई एम नॉट सेइंग कि सूटेड बूटेड आना है उसको, बट यू डू एड्रेस हिज क्वेश्चन प्रॉपरली। यू शुड स्पीक स्लोली, सॉफ्टली, क्लियरली विद द ऑफिसर। ऑफिसर के सामने पोलाइटली बात करनी है, और गुस्सा नहीं होना, इरिटेट नहीं होना उनके क्वेश्चन से, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हाउ यू हैव अकाउंटेड फॉर। कई बार क्या होता है, क्लाइंट को इंप्रेस करने के चक्कर में कुछ यंगस्टर्स कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं ऑफिसर को, या अलग तरह के डिस्कशन में चले जाते हैं। सर जीएसटीआर 1 2 3 आई नहीं, 3 भी आ गई, 3 आती तो ऐसा होता वैसा होता। दीज थिंग्स डजेंट हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर केस। केस पर हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। देखिए मैं हियरिंग में जाता हूँ, मेरे से कई बार ऐसा हुआ है कि ऑफिसर्स ने किसी और केस को भी डिस्कस करने की कोशिश करी है, तो मैंने हर केस में यही आंसर दिया होगा, सर आज पढ़ के नहीं आया। अब मैं समझ में नहीं आ रही, सर आप बताइए आप क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं। नाउ वेदर इज ट्रीटमेंट इज राइट और रॉन्ग, आई डू नॉट करेक्ट, डू नॉट ट्राई टू टीच योर ऑफिसर। मेंटेन डेकोरम, बहुत पोलाइटली बात करनी है। आपको ऑफिसर को इंप्रेस करना है अपने आर्ग्यूमेंट से, आपको क्लाइंट को इंप्रेस नहीं करना।
पता चला क्लाइंट को इम्प्रेस करने के चक्कर में ऑफिसर बिगड़ गया, फिर आप केस हार जाओगे। अल्टीमेटली आप पॉजिटिव रिजल्ट ला के दो, क्लाइंट इज हैप्पी। ओके। इट्स अ प्रॉब्लम विद जजमेंट्स। अच्छा, कई बार ना बहुत हार्श लैंग्वेज लिख देते हैं लोग। डोंट यूज हार्श लैंग्वेज। यंगस्टर्स के साथ प्रॉब्लम है, खासतौर से जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए हैं। किसी भी ई लाइब्रेरी का सब्सक्रिप्शन ले लिया, हेड नोट्स पढ़े और केस को समझ मान लिया कि यही केस। हेड नोट्स से केस को जज मत करो। पूरा जो भी केस आप कोट कर रहे हो, पूरा केस एक बार पढ़ो। सिर्फ हेड नोट्स के बेस पे केस को कोट मत करो, वट एवर टाइम इट इज टेकिंग। अब कई बार मेरे भाई जो जुड़े हुए हैं या बाद में इसको रिकॉर्डिंग को देखेंगे, वो ये भी कह सकते हैं सर कुछ पैसे तो मिलते ही नहीं, कुछ पैसे तो मिलते ही नहीं, फिर मैं पूरा केस लॉ क्यों पढूं। क्लाइंट वैल्यू नहीं समझ रहा। सर क्लाइंट वैल्यू समझे ना समझे, हमें तो अपना जॉब बेस्ट तरीके से करना। और जब आप वैल्यू एडिशन दोगे तो क्लाइंट आज नहीं तो कल समझेगा ही समझेगा। कई बार कॉपी पेस्ट ऑफ प्लीडिंग्स चलती है। कोई नोटिस आया, किसी को कॉल कर दिया, भाई 73 का तुम्हारे पास रिप्लाई पड़ा है क्या। वो रिप्लाई दे देते हैं और आपने रिप्लाई बना दिया। नहीं, उसको कस्टमाइज करो, डू नॉट कॉपी पेस्ट। टेम्पलेट मिला है, उसको कस्टमाइज करो। कस्टमाइजेशन का जो काम है वो आपका स्टाफ नहीं कर सकता। कस्टमाइजेशन का काम आप ही कर सकते हो। ये अपने स्टाफ पर, आर्टिकल पर देकर, पेड स्टाफ पर देकर कस्टमाइजेशन मत कराना। टेम्पलेट भी कहीं से मिल जाए, जैसे हमने भी आपको दी है, तो टेम्पलेट को खुद टाइम देकर कस्टमाइज करना, स्टाफ से मत कराना। क्योंकि जितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी केस की होगी ना, उतनी अंडरस्टैंडिंग आपके स्टाफ की कभी नहीं डेवलप। सो ऑन एंड होल, कुछ पॉइंट्स याद रखना। डू नॉट रश टू प्रूव इनोसेंस ऑफ योर क्लाइंट। फर्स्ट थिंग, यू शुड challenge the allegation. And if you are not able to save so cause notice, कई बार पुराने से पुराना क्लाइंट फाइल लेकर चला जाता। For same transaction, multiple accounting treatment can be done. Multiple double AR judgments from various states are on same transaction. State A might say something, state B might say something, or both views are possible. So never say कि जो हमारा ट्रीटमेंट है उसको डिपार्टमेंट चैलेंज नहीं कर सकता। एलिगेशंस इज नॉट अ सस्पिशन। सिर्फ एलिगेशन लगा देने से डिपार्टमेंट की रिकवरी नहीं बनेगी। Allegation is merely an accusation. Allegation is not a fact. In fact, allegation is an opinion of the officer. Fact वो है जिसको दोनों पार्टी डिनाई ना कर सके। You had filed your GSTR 3B return late on 27th of July. It's a fact. No one can deny. लेट क्यों हुई, इस पर चर्चा हो सकती है। शो कॉज नोटिस में देखो, एक हिंदी में कहावत है, हिंदी में संस्कृत में, नीर शीर विवेक हेतु हंसा हंसा बगा बगा। दूध और पानी को जब अलग करना होता है तो हंस भी श्वेत है, बगला भी श्वेत है। हंसा श्वेता, बगहा श्वेता। नीर शीर विवेक हेतु हंसा हंसा बगा बगा। एक जो शो कॉस नोटिस है, उसमें से ओपिनियन को अलग करना और फैक्ट्स को अलग करना बड़ा मुश्किल काम है। यहीं पर आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अगर आपने ये काम कर दिया, फैक्ट्स और ओपिनियन को अलग कर दिया, तो आप आधा केस जीत गए। क्योंकि कई बार ओपिनियन ऐसे लिखा होता है जैसे वो फैक्ट है, लेकिन आपको समझकर फैक्ट्स और ओपिनियंस को अलग करना। आप किसी एलिगेशन से एग्री नहीं करते, सिर्फ एग्री नहीं करते, इस बात से आप केस नहीं जीत सकते। यू हैव टू सब्सटेंशिएट योर डिसएग्रीमेंट with some sort of evidence.
or documentation that I disagree with your allegation and this is my reason, or I place reliance on these evidence and documents why I disagree with you. And कई चीजें बता रहा हूँ. सो मैं डिस्कस कर चुका है कि 2A वर्सेस 3B में जब भी मिसमैच आएगा तो दे विल से दे द इनहेरेंट प्रजम्पशन कि सप्लायर ने डिफॉल्ट करा या डेट भी तो फर्क है. फॉर एग्जाम्पल आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड से, आपकी कंप्यूटेशन से उन्होंने अदर इनकम को पिक करा और डिमांड कर दी CGST SGST की. इसकी एक इनहेरेंट प्रजम्पशन निकल कर आ रही है दैट प्लेस ऑफ सप्लाई, सॉरी ये टाइप गलत हो गया, इंट्रास्टेट लिखना है यहाँ पर. द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इंट्रास्टेट, विदा विज इट कुड बी इंटरस्टेट. कई बार आपकी रिकॉर्ड्स को, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट कर देता है डिपार्टमेंट. बुक्स ऑफ अकाउंट रिजेक्ट कर देता है लेकिन उसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेस पर आपकी डिमांड कर देता है. ये पॉसिबल नहीं. If they are rejecting your books of account, then they have to individually investigate and then they have to create a demand. Because if they are rejecting your books of account, they cannot create demand on the basis of those books of account which they have rejected. तो ये मैंने डिस्कस कर लिया. टैक्सपेयर कैन नॉट एडमिट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, वो सिर्फ. सो आप जब भी नोटिस आए उसको इस फॉर्मेट में बात ही, इशू ABCD, फैक्ट है, यस नो, ओपिनियन है, एविडेंस है इसका. अगर मुझे चैलेंज करना है तो क्या मेरे पास कोई एविडेंस है, एंड नोटिस में मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इस फैक्ट को नहीं कर रहा. एंड इफ आई एम रिजेक्टिंग, व्हाई आई एम रिजेक्टिंग, बिकॉज इट इज द रॉन्ग फैक्ट, या टेक्निकली on basis of some law I am going to reject. So this PPT has already been shared to you. Supporting documents have been shared to you. I would like, देखिए टाइम जो था, टाइम से हम एक्सीड कर गए 7:30 से. तो अभी भी मैं क्वेश्चंस के लिए आपके जो भी क्वेश्चंस हैं प्लीज सेंड इन चैट मैसेंजर. मैं चैट से था. देखिए अगर कोई कह रहा है, सी यू आर सेइंग दैट यू हैव नॉट रिसीव्ड PPT. See if you have not received PPT, how you have joined this session. We have sent one message to everyone. In that message, there was a Zoom link and there was a link for PPT. So if you have joined this session on the basis of message, then please go to the message again. You will find a link for Google Drive. And one more thing I must tell you, sometimes the link of Google Drive does not work on many phones due to their inherent setting. वो मुझे नहीं पता क्यों ऐसा होता है. On some phones, Google Drive link works. On some phones, Google Drive link does not. In those cases, please open your Drive link in your desktop or a laptop. इसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, then we are here to help you. Okay. Last query, payment under protest, not mentioned in GST except investigation. Sir, मैं बताता हूँ. In fact, if you go to 2019, so there is a good question, payment of GST under protest. 2019 में एक FAQ आई है और FAQ में लिखा हुआ है कि you cannot make payment under protest in GST. FAQ में आंसर में दे रखा है, but this does not mean कि FAQ से लॉ गवर्न हो जाएगा. वो जो लिखते रहे उसकी हमें चिंता नहीं करनी. They can write anything. Payment under protest आज भी चलता है. Lot of notices being received on the 74, whether they are just copy pasted provision above mentioned without establishing metria. For example, stating, so these kind of notices you have to challenge. Basic premise of the notice is incorrect. So any demand on basis of when the notice is infractuous, demand is not sustainable. GST not accepting circular in 183 वो CA certificate. Sir, choice थोड़ी है. Circular is binding on them. If it is not binding on me, then also circular is binding on them. They cannot say circular उन पर binding नहीं है. Is the chat gone? Okay. Okay.
if you have promised more, sir, you promised more, delivered even more. Okay, थैंक यू। मुझे लगा आप लिख रहे हैं यू प्रॉमिस मोर यू डिलीवर्ड लेस। मुझे तो डर लग गया कि यार गड़बड़ क्या हो गई। So, how- देखो मेरे को लगता है मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दिए। मैं स्टॉप कर देता हूँ वरना वो फिर रिकॉर्ड नहीं होगी। चलो मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग।